Ah, Hello. Hello and welcome to today's live stream. Today is Saturday, the 7th of January 2024. लाइव स्ट्रीम आजकल मेनली हिंदी में हो रही है, पर अगर किसी के पास अंग्रेज़ी में सवाल है तो मैं उसका भी जवाब देने को तैयार हूँ। बट लाइव स्ट्रीम 2 दिन होती है, सैटरडे और वेडनेसडे को 8 बजे। वेडनेसडे को मेंबर्स ओनली होता है। अगर आप उस लाइव स्ट्रीम को देखना चाहते हैं तो मेंबर बन जाइए जॉइन बटन दबाकर, और सैटरडे का लाइव स्ट्रीम तो वैसे ही पब्लिक होता है सबके लिए। मुझे कुछ कनेक्शन इश्यूज़ आ रहे हैं पिछली बार की तरह, मतलब वेडनेसडे को भी ये प्रॉब्लम हुई थी। अगर किसी को लैग वगैरह एक्सपीरियंस हो रहा हो, तो प्लीज़ बताइए ताकि मैं उसके आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, पर मैं वीडियो ऑफ करके सिर्फ़ ऑडियो कर लूँगा ताकि बात आराम से समझ में आ जाए। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट में, उसको पिन कर दूँगा। 1 सेकंड। ओके, मैंने लिंक शेयर कर दिया पर वो पिन नहीं हो रहा है, 1 सेकंड। पिन क्या हो रहा है मेरे कनेक्शन को आज? हाँ, हियर इट इज़, आई विल पिन इट और ये पिन हो गया, पिंडदान हो गया। तो अभी कोई आ सकता है अगर आना है तो हाँ, लोग जॉइन करना शुरू कर चुके हैं, मैं आता हूँ कुछ देर में, तब तक कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। अ डिड दे ओह याह! आज संडे सॉरी सैटरडे को लाइव स्ट्रीम होना था, सैटरडे को लाइव स्ट्रीम होना था पर हो नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं गया था। मैं प्रोफ़ेसर नरेंद्र नायक एक वर्कशॉप कर रहे थे पास ही कहीं, मैं वहाँ उनके पास गया था देखने के लिए, उनसे मुलाकात भी हुई, अच्छा लगा। वहाँ गया था कल इसीलिए यहाँ नहीं आ पाया। सॉरी आज संडे है। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। वेडनेसडे और सैटरडे को होता है, आज संडे को हो रहा है क्योंकि सैटरडे को नहीं हो पाया था। सॉरी, थैंक यू फॉर हूएवर पॉइंटेड इट आउट। Okay. Sudarshan says, I was listening to one of your live podcasts while I was napping, and suddenly Jaggi Vasudev entered with over 1.5 million people benefited from this, and I could not sleep any further. अच्छा, ad आया था. Okay, okay, okay. Sorry about that. कुछ नहीं किया जा सकता. मैं कुछ नहीं कर सकता उस बारे में. Why do some online atheist circles turn into weird cultish spaces where people are very hostile to theists and think themselves as enlightened among mere mortal theists? I don't know of many such places. Yes, some spaces do turn into that, and I suppose I all I can do is prevent this space from turning into that. क्योंकि यहाँ का वो फंडा नहीं है. यहाँ का फंडा है कि I am open to all opinions, except opinions that dehumanize other people. एंड अगर किसी को बात करनी है किसी बारे में तो आके कर सकता है। आमतौर में मैं उन लोगों को इनफैक्ट प्रायोरिटी देता हूँ जो मुझसे डिसएग्री करते हैं। सो वही है और क्या। जो लोग भी क्यू में हैं प्लीज़ प्राइवेट चैट में जाएँ और मुझे बताएँ कि उनको किस टॉपिक पे बात करनी है। परविंदर इज़ अ गुड पर्सन हू हैज़ ऑलरेडी डन इट। बाकी लोग भी प्राइवेट चैट में जाएँ और कुछ मत लिखो, हाय हेलो मत लिखो, ये मत बोलो मुझे पहले लो, बस टॉपिक बताओ क्या बात करनी है। 1 सेंटेंस अगर 1-2 सेंटेंस लिख सकते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो परविंदर को पहले लेते हैं। हेलो परविंदर। हेलो विमो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? कोई इशू तो नहीं है? आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ तो विमो, हमारी बात हुई थी लास्ट सैटरडे। ओके, आप इसी नाम से आए ओके। थे क्या? हाँ, परविंदर राणा इसी नाम से आया था मैं। अच्छा, मुझे याद नहीं। अच्छा, मतलब नहीं, वो आफ्टर लाइफ एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी। अच्छा, वो फिर आप मैं थे? अच्छा, ठीक है। हाँ मुझे हाँ, याद है वही था। कन्वर्सेशन पर आपका नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हुँ, हाँ तो बताइए। विमो, उस दिन शायद कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं समझ नहीं पाया या ढंग से कन्वे नहीं कर पाया, या कुछ ऐसे मेरे हुँ, पॉइंट्स थे जो आप नहीं समझ पाए थे। ओके, तो बताइए। हाँ, मतलब हमारे जो डिस्कशन था ना, वो पहुंच चुका था वहां तक, मेडिटेशन तक, कि हुँ, मैं मेडिटेशन क्यों ना करूं। परविंदर 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे कुछ हाँ वीडियो में कुछ लैग आ रहा है। हाँ हाँ। अगर ज़्यादा लोगों को लैग आ रहा है तो बताएँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ़ ऑडियो से बात करता हूँ। लैग किसी को आ रहा है क्या? प्लीज़ चैट में बताइए। मुझे भी आ रहा है लाइक तो। लैग आ रहा है आपको? अच्छा रुकिए, मैं अपना हाँ वीडियो ऑफ कर देता हूँ फिर। हाँ हाँ। हुँ, माइक चलो, वीडियो ऑफ कैसे करूँ? ओह याह! यहाँ पे है। हाँ, बताइए। हाँ तो भैया, मतलब मुझे बस ये जानना है कि मैं मेडिटेशन जो मुझे बताई जा रही है उस चीज को जानने के लिए, तो वो मुझे हुँ। क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब आफ्टर डेथ के मैंने बारे में कब कहा जानने कि के लिए। मैंने कब कहा कि नहीं करना चाहिए? मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेंटल हेल्थ के फ़ायदे हैं। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि आप आफ्टर डेथ के नॉलेज के लिए मेडिटेशन करने से आपको कुछ फ़ायदा होगा, ये आप नहीं कह सकते ना।
नहीं पता है क्या है, जैसे मान लो कि कुछ अगर देखो, जैसे मेडिटेशन में एक कुंडलिनी योगा होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो, पढ़ा हो तो इसके बारे में। हुँ। पढ़ा है कभी? हुँ, जो हुँ। सेवन चक्रास की जो बताया जाता है कि सेवन चक्रास जो भी थ्योरी है, तो हाँ। उसमें जैसे मूलाधार स्वादिष्ठान के बाद एक मणिपुर चक्र होता है जो हमारे नेवल के पास होता है, ऐसा हुँ, बोलते हैं। तो हुँ। नेवल के साथ को रिलेट करता है, ठीक है। अभी नेवल में वो सर करते मुझे क्या है? मुझे मुझे ये हाँ बताइए कि मेडिटेशन करके आपको मरने के बाद ज़िंदगी होती है, इसका सबूत कैसे मिल सकता है? हाँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप सुनिए पूरी बात। हुँ, तो जैसे नेवल में वो बोलते हैं कि अग्नि का स्थान है, जो अग्नि तत्व जो बोलते हैं 5 तत्व में से, उसमें से एक है अग्नि तत्व, एंड उसका स्थान है हमारी एक सवाल पूछ सकता हूँ? एक हाँ, सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ। क्या आप मेटाफ़ोरिकली बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि हमारे शरीर में सचमुच वहाँ पे अग्नि में है? नहीं, थ्योरी मतलब थ्योरी ये बोल रही है उनकी। मैं नहीं, जस्ट थियरी अभी मैं मतलब आप अपना अगर आप इंसान के शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई तो एविडेंस होना चाहिए। मतलब माइक्रोस्कोप से या किसी और तरीके से इस चीज़ को अरे रे! डिटेक्ट किया जाए, अरे भाई, मैं क्या बोल रहा नहीं हूँ, हुआ है। भाई मेरी बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस योगा जो कुंडलिनी योगा है उसमें ऐसा बोला जाता है, तो ये मेटाफोरिकली है, मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि ऐसा है, हम डिटेक्ट कर सकते ओके, हैं। ठीक है। तो आप मेटाफ़ोरिकली बोल रहे हैं। कूल, कूल, जी, कूल। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ। तो अभी उन्होंने बोला मुझे कि यहाँ पे जो है अग्नि का स्थान है, ठीक है। तो अभी हुँ, एक मेडिटेशन होता है जी तुम्मो, जिसके ऊपर रिसर्च ओके। की गई है काफी। अभी हुँ, इसमें ये लोग करते क्या है, ये विजुअलाइज करते हैं अपनी जो नेवल है वहां पे एक फ्लेम को, मतलब मणिपुर चक्र को ही एक्टिवेट करते हैं ये। एंड अब तो ये उसके मेटाफ़र सर मेटाफ़र के ऊपर रिसर्च कैसे हो सकती है? अरे सुनो तो भैया, उनकी बॉडी के नहीं, ऊपर नहीं, जो नहीं मुझे रिसर्च। ये समझाओ ना मुझे ये समझाओ ना मेटाफ़र के ऊपर हाँ, रिसर्च कैसे हो सकती है? मेटाफ़र एक पोएटिक चीज़ है, हाँ, लिटरेरी चीज़ है। हाँ, रिसर्च करके हाँ। उसका एविडेंस कैसे मिल सकता है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला है जी तुम मो, जो मेडिटेशन है उसके, जो हुँ, मेडिटेशन करने वाले हैं उनके ऊपर रिसर्च हुई है। हाँ, समझ रहे हैं आप? मैंने ये बोला है। ओके, तो अभी हाँ। ये लोग क्या करते हैं, ये आप ये लगा लो विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, उस चीज को, ओके। उसी फ्लेम को मणिपुर में, जो ये मानते हैं, मैं इनका क्राइटेरिया और जो हुँ, हमें रिसर्च में पता चला है वो दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो ओके। ये लोग क्या करते हैं, अपने माइंड में उस चीज को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, उसके हुँ, बाद कुछ ब्रीथ प्रैक्टिसेस करते हैं, और हुँ, हमें रिजल्ट में क्या मिला है, जो हुँ, बेंसन की रिसर्च है, रिचर्ड बेंसन की जो रिसर्च है, जो नेचर मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल में से एक माना जाता है, उसके अंदर ये हुँ। पब्लिश हुई है कि ये अपनी बॉडी का पेरिफेरल टेम्परेचर को 8 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देते हैं। सर आप ये सब को बायपास करके सीधे पॉइंट पे आ जाइए ना, आप मुझे पूरी रिसर्च समझाएँगे तो बहुत टाइम लगेगा। मेरा सही है। सवाल वही है कि इस सब से ये कैसे साबित होता है कि आत्मा है या मौत के बाद ज़िंदगी है? मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने जब एक चीज जो उन्होंने हमें मेटाफर लग रही थी, एंड उन्होंने ये चीज हमें करके दिखाई, जैसे बॉडी का कोर क्या टेम्परेचर को दिखाया? इंक्रीज, को बॉडी का बॉडी के, कोर टेम्परेचर को मैनिपुलेट कर पाना, आत्मा हाँ, को कैसे साबित करता है? नहीं करता है, नहीं तो क्या करता है। समझा रहे हो मुझे? आप क्यों बता मैं रहे हैं ये फिर? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो मुझे, जो मेडिटेट करने वाला इंसान है, वो मुझे ये हाँ, बोल रहा है कि ये मेरा गोल नहीं था, मेरा ओके। गोल है, मेरा गोल है आफ्टर लाइफ को समझना, या फिर हुँ, मेरा गोल है कॉन्शियसनेस को बॉडी, सिर्फ बॉडी तक ना रख के उसके बियॉन्ड हुँ, जाना, ठीक है, ओके। और मैं उसके लिए हुँ। करता हूँ, और वो चीज मैंने एक्सपीरियंस कर ली है। तो अब एक्सपीरियंस कैसे करेंगे आप? मुझे ये बताओ आप किस किस प्रकार का एक्सपीरियंस होगा वो जो आपको बताएगा कि मौत के बाद ज़िंदगी है? कैसे होगा मुझे, ये? जैसे ओबीई है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मैं आपको मेडिटेशन करने से बिल्कुल भी नहीं रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम्म। मेडिटेट करना है, मन की शांति के लिए करना है तो कर सकते हो। ऐसे लोग हैं जिनको मेडिटेशन से फ़ायदा भी हुआ है। पर मेडिटेट करके आफ्टर लाइफ़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने कब बोला कि ऐसा कुछ प्रूफ है कि उससे हम आफ्टर बात लाइफ तो की उसी बारे में कर रहे इंफॉर्मेशन। हैं ना। नहीं, आप नहीं, अब हम बात नहीं, तो मैं उसी तो बारे में कर ये रहे हैं बोल, ना। अच्छा आप यहाँ चलो सिर्फ़ ठीक है। मेडिटेशन को प्रूव करने आए हैं या आफ्टर लाइफ़ के बारे में बात करने आए हैं? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मेडिटेशन को एज़ अ टूल यूज़ करना चाहता हूँ आफ्टर लाइफ को समझने के लिए। या कैसे फिर समझेंगे? वो, कैसे? कैसे? दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश वेयर इज़ द ओके, लिंकेज? ओके, मेडिटेशन ओके। और आफ्टर लाइफ़ का क्या लिंकेज है? ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने गैलीलियो का एग्ज़ाम्पल लिया था, ठीक है? फिर से यू बताओ मैं भूल रिमेंबर? चुका हूँ।
हाँ, गैलीलियो गैलीलियो ने टेलीस्कोप दिया और टेलीस्कोप दे के बोला कि पहले उसने बोला कि उधर उधर ऐसा ऐसा है। हमने बोला कैसे पता? उसने बोला टेलीस्कोप लो और देख लो। तो वो हुँ, चीज एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन हुँ। पहले हमने गैलीलियो ने जो बोला है उस पे ट्रस्ट किया है ना सर। हाँ, पर अब उसके बाद उसके साथ उसने टेलीस्कोप भी दिया ना, अगर नहीं देता तो क्या करते ट्रस्ट? हाँ, एग्जैक्टली exactly। अब मैं बोल रहा हूँ कि वही वही जो टूल है ना, वो हुँ। मेडिटेशन है इसमें। नहीं है, क्योंकि क्यों? टेलीस्कोप एक टैंजिबल चीज़ है, आकाश दिखता है, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके आकाश को देखा गया है, इसको हज़ारों हाँ बार डॉक्यूमेंट किया गया है। अगर हाँ आप एक हाँ टेलीस्कोप लेके अभी देखेंगे तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं जो गैलीलियो ने देखी थी। हाँ मेडिटेशन हाँ का ऐसा रिकॉर्ड कहाँ है? हाँ कहाँ लिखा हाँ। तो हुआ है? अच्छा, एक अच्छा मुझे ये एक बताओ, एक नहीं नहीं एक नहीं नहीं इंच नहीं। प्रूफ हाँ नहीं है इसका, 1 इंच ठीक है, प्रूफ नहीं है, पर मुझे हर तो सिर्फ साल, हर दिन कोई ना कोई आके कहता रहता है कि ये तो टेलीस्कोप जैसा ही है। नहीं है, क्लेम्स क्यों? होते हैं और एविडेंस होता है। गैलीलियो भैया ने क्लेम किया, क्लेम के क्लेम के ऊपर भाई अगर सुन आप लो, रिसर्च। गैलीलियो सुन लो भाई, रिसर्च हाँ, हुई है और घंटा मिला है, फिर भी मानेंगे क्या? क्या मिला? रिसर्च रिसर्च हुई है हुई और है। हाँ आप जो भी रिसर्च बताएँगे, एक भी रिसर्च ने आज तक ये साबित नहीं किया है कि मौत के बाद ज़िंदगी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ है कि जो लोग मौत हाँ के बहुत करीब आए हैं, उनको कुछ हाँ एक्सपीरियंस जो है, पर वो मरे नहीं थे। ऑल हाँ। दोज़ अच्छा, एक्सपीरियंसेस आर एक्सपीरियंसेस हैड तुम्हें बाय ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल दे वर अलाइव। तुम्हें गैलीलियो कैसे ने पता कि वो टेलीस्कोप मरे नहीं दिया, थे? तो क्योंकि वो ज़िंदा हैं। मरने के बाद लोग वापस नहीं आते हैं। अगर कोई अच्छा ज़िंदा अच्छा अच्छा है, अच्छा। तो उसका मतलब है कि वो नहीं मरा नहीं था। नहीं, समझे? डेथ की डेफिनेशन क्या है? इंसान का डेथ की जला देना डेफिनिशन, ही डेथ है क्या? इंसान जल हाँ। गया उसको डेथ मानोगे आपको क्या? लगता मतलब है जब तक। आपको अब आपको लगता है इंसान जल गया मतलब वो नहीं होती है डेथ? नहीं नहीं नहीं, आपके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल डेथ क्या है नहीं, फिर? नहीं, आप मुझे ये पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग डेथ है, हाँ अगर कोई इंसान जल गया पूरी तरह से, उसका बॉडी खत्म हो गया तो वो डेड है। अब आप हाँ, बताइए कि फिर आप तो कोई इंसान के पूरी प्रॉब्लम ही तरह नहीं से है। जल जाने को, अगर आप हाँ इंसान के पूरी तरह के जल जाने को डेथ नहीं मानते हैं तो बताइए? हाँ, ठीक है, फिर रीइंकार्नेशन के केसेस कैसे हो रहे हैं? नहीं होते। अच्छा हाँ, ये फिर ठीक है। ऐसे तो मैं किसी भी चीज को बोल सकता हूँ कि नहीं होती। ऐसे तो आप पूरी मुझे पूरी प्रूफ साइंस को दीजिए बोल ना, सकता हूँ आप मैं। मुझे प्रूफ दीजिए रीइन्कार्नेशन का, क्या? एक एग्ज़ाम्पल दीजिए मुझे, एक एग्ज़ाम्पल हाँ, दीजिए रीइन्कार्नेशन मेरे का। मेरे खुद के फ्रेंड का हुआ है रीइंकार्नेशन। कैसे पता आपको? उसने जो जो बताया था, उसने जो जो चीजें बोली हैं, वो हमने वेरीफाई की हुँ, हैं जाके। कैसे वेरीफ़ाई किया बताइए? उस जगह पे जाके जो जो डिटेल्स उसने हमें दी थी, जिस जगह पे वो कभी गया तक नहीं था, हमने खुद जाके वेरीफाई किया है। उसके वहाँ पे जो चीज़ें आपने वेरीफ़ाई की, जो नॉलेज आपको वहाँ पे मिली, जो आपके फ्रेंड के पास नहीं हो सकती थी, वो आपके हाँ, फ्रेंड के पास आने का कोई और तरीका है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो कहीं बिल्कुल पढ़ भी नहीं नहीं है। सकता था, वो किसी से बोल नहीं सकता था, वो कहीं से 3 पिकअप साल नहीं का कर था सकता भैया था। वो। भैया वो 3 साल का था जब उसने वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, और वो पूरी पूरी नोट डाउन कर रखी है। और हाँ, हमने खुद इसके जाके वो एक्सप्लेनेशंस वेरीफाई है की। भैया, इसके एक्सप्लेनेशंस है। 3 साल का बच्चा सुन के समझने के लायक होता हाँ है। हाँ, ऐसे ऐसे तो बहुत ऐसे सारे तो भैया केसेस, देखो देखो सुन लो देखो, भैया, रैशनल। नहीं 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 सुन लो। नहीं, मैं रैशनैलिटी आपको का म्यूट मतलब कर रहा हूँ नेगेटिव ताकि मैं समझा स्केप्टिसिज्म नहीं सकूँ। है भैया। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप मेरे ऊपर टॉक ना कर सकें। ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ बच्चे क्लेम करते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। कई बार ऐसा मिलता है कि वो ऐसे परिवारों में होते हैं जहाँ वो चीज़ें पिकअप कर लेते हैं। उनके माँ-बाप कहते हैं कि पता है पड़ोस के गाँव में ना वो आदमी मर गया था, लोग कहते हैं उसका पुनर्जन्म हुआ है। पता है लोग कहते हैं कि उसके उसकी आत्मा भटक रही थी, पता है उसके परिवार में ये प्रॉब्लम्स थी। बच्चे पिकअप कर लेते हैं और बच्चे अटेंशन पाने के लिए कहने लगते हैं कि मैं ही उसका अगला जन्म हूँ, मैं ही उसका नया जन्म हूँ। हाँ, हाँ, मेरे साथ ये सब हुआ था। बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनके अंदर सच्चाई और झूठ को जानने की जो क्षमता होती है, जो डिफरेंशिएशन करने की क्षमता होती है, वो अडल्ट्स के मुकाबले कम होती है। और कई बार जब अडल्ट्स भी इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि आप हैं, आपने एविडेंस फॉलो नहीं किया, आप पहले से मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, आपके दोस्त के एक्सपीरियंसेस ने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिए। ये जस्टिफिकेशन है, ये एविडेंस नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी चीज़ का पुनर्जन्म के साथ रिश्ता है, यही कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा? इसको एस्टेब्लिश करने का ही कोई तरीका नहीं मिलता। आप किसी के अकाउंट्स को आप बताइए, एक बच्चा बोलेगा, मैं आपको अनम्यूट करूँगा 1 सेकंड में, बताइएगा। एक बच्चा मिलेगा और वो बच्चा कुछ क्लेम करेगा और आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उस बच्चे ने किसी से सुन के कुछ रिपीट कर दिया, या तो वो पिछले जन्म में कुछ और था, उसकी आत्मा का रीइन्कार्नेशन हुआ है। इन 2 ऑप्शंस में से ज़्यादा लाइकली आपको कौन-सा लगता है? भैया यू आर मैं अनम्यूटेड। क्या। हाँ हाँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ना, जैसे आप बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि हर एक इंसान, मतलब आपको लग रहा है कि मैं रैशनल हूं ही नहीं। ठीक है, हर कोई ये कोशिश मैंने यही ये नहीं करता कहा। है।
मैंने ये नहीं, नहीं नहीं, कहा। नहीं, आपको मैंने वैसा लगता नहीं है कि किया। हमने सीधा-सीधा उसकी बात को मान लिया। हमने खुद ये नहीं, चीज़ें नहीं मैं वो सोची नहीं कह होंगी रहा हूँ। क्या? मैंने जो कहा मैंने आपके सामने रिपीट किया अभी। मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए एक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि अगर एक बच्चा वैसे क्लेम करेगा, तो आपको क्या लगता है ज़्यादा वो कौन-सी चीज़ मैं के मैं चांसेस हैं? वो बच्चा मैं कहीं से बता रहा कुछ हूँ। पिकअप कर रहा है या उसको वो सचमुच रीइन्कार्नेटेड हुआ? क्या किसके ज़्यादा चांसेस हैं? भैया इस चांसेस सवाल का का जवाब मैं मुझे क्यों बताएँगे आप डिसाइड करूँ? रीइन्कार्नेट मैं पहले से हाँ, बायस क्यों हो जाऊं किसी भी चीज के प्रति कि वो क्या बोल रहा है। आपको पता है हर एक माँ बाप इस चीज को इग्नोर ही करता है। अगर कोई बच्चा बोलता है ना, कोई ये नहीं अच्छा बोलता ठीक कि है। तेरा रीइंकार्नेशन ही हुआ है। मैं आपका बायस टेस्ट करता हूँ। मैं आपका बायस टेस्ट करता हूँ। हाँ, तो हाँ, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि उसको किसी और जगह की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये बताया उसने। हाँ, बताया। क्या आपके दोस्त ने आपको ये बताया कि उसका पुनर्जन्म हुआ था? हाँ, उसने यही बताया। आपकी उम्र तब क्या थी? 3 साल? मेरी उम्र 3 साल नहीं थी भैया, मुझे तो अभी पता चला है 20 साल का होने के अच्छा, बाद। तो आपके दोस्त के साथ आपका दोस्त भी आपकी उम्र का है? हाँ, मेरी उम्र का ही है, मेरे साथ ही तो पढ़ता था, उसने कभी नहीं बताया। वो अभी 20 साल का है, वो आपके साथ पढ़ता था हाँ, और आपको उसने बताया ये कब? हाँ, हाँ। आपको ये उसने कब बताया? क्या क्या आप जब कितने बड़े थे? जब उम्र क्या थी? जब मैंने रीइंकार्नेशन स्टडी करना स्टार्ट किया है ना, उसने तब बताया मुझे कि उसके साथ ये उम्र सेम क्या थी? चीज हुई। उम्र क्या थी आपकी? मेरी 20 ही साल थी उम्र। मतलब इसी साल बताया है। हाँ, अभी बताया कुछ टाइम पहले ही। अच्छा, तो 3 हाँ, साल की उम्र में उसने कुछ हाँ, एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में हाँ, उसने आपको 20 साल की उम्र में बताया और आपने जाके चेक किया हाँ। और वो सब वेरीफाई हो गया। क्या इस नहीं। बात की संभावना सुनिए ना, क्या इस बात की हाँ, संभावना है कि या तो आपका दोस्त आपसे झूठ बोल रहा है या तो आपका दोस्त खुद अपने आप को इस मुगालते में डालने में सफल हो गया है कि उसका पुनर्जन्म हुआ था? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर मिस्टेकन अबाउट थिंग्स, राइट? भाई मैंने सिर्फ मेरे फ्रेंड से नहीं पूछा है, मैंने उसके घर पे जाके बात की, उसके दादाजी से बात की है, उसके ये फादर से कहानियाँ बात की। ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार में ये कहानी स्प्रेड आउट हो। हाँ। ऐसे कई विश्वास होते अ, हैं भ जो कि भैया परिवार मैं के अंदर बता रहा स्प्रेड हूँ, आउट होते हैं। सुनो, सुनो, सुनो। अभी इसको ना मुझे ये रैशनैलिटी नहीं लग रही, ये नेगेटिव स्केप्टिसिज्म है। आप हर चीज़ को डाउट कर रहे हो, मैं ठीक है? अरे डाउट तो उन्होंने तभी क्या करूँगा ना बेनिफिट भैया लेने अगर के लिए अच्छा स्टोरी फैला दी? ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मेरा ये क्लेम है हाँ, कि हाँ। एक एक पैरा डीमन है एक दूसरे डायमेंशन से जो हुँ, आपके दोस्त के मन में ये नॉलेज डाल रहा है। अब मुझे हुँ। आप विश्वास करेंगे? हो सकता है। विश्वास करेंगे? क्या? आपकी बात कि पे? एक और डायमेंशन से कोई डीमन आया है, वो आपके दोस्त के हाँ। मन में ये इन्फॉर्मेशन डाल रहा है और उसको ये मानने के लिए मना रहा है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। मानेंगे आप ये बात? ये तुम बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ, मानोगे? नहीं मानूँगा। क्यों नहीं मानोगे? आप क्योंकि स्केप्टिकल क्यों हो रहे हो? व्हाई आर यू तुमने नॉट ओपन माइंडेड? आपको अपना अबे दिमाग खुला रखना चाहिए सर, आपको अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए। भई कुछ भी भैया पॉसिबल है। हँसने की क्यों नहीं हो ज़रूरत नहीं सकता? है। कुछ मेरा भी हो हाँ, सकता है। मैं रीज़न दे रहा हूँ ना, मैं रीज़न दे रहा हूँ। बताओ फिर। आपने एक्सपीरियंस किया है क्या उस चीज़ को? हाँ, बिल्कुल, वो पैराडिमन मेरे बगल में बैठा है अभी। हाँ, तो बस ठीक है। मैं आके वेरीफ़ाई करूँगा आपके क्लेम को। कैसे वेरीफाई करोगे बताओ? आप दिखाओ मुझे कहाँ है डीमन? वो दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है। ठीक है, तो मैं किसी भी चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। हाँ, तो इस बात को क्यों मानने के लिए रेडी हो फिर? क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड पे ट्रस्ट करता हूँ ना, आप पे थोड़ी ना ट्रस्ट करूँगा मैं। हाँ, तो इट डज़ नॉट कम टू स्केप्टिसिज्म, डज़ इट? इट कम्स टू योर प्रीकंसीव्ड नोशंस. You trust your अरे friend, so you're willing to या believe whatever they यार say. If your ये friend तो is सही। mistaken or your friend is lying, तुम चेक नहीं करोगे ना? किसको अब मेरा फ्रेंड मिस्टेकन कैसे 3 साल के बच्चे को किसने 140 किलोमीटर दूर है जहां हम गए थे उस चीज को 340 चेक। 3 साल के 140 बच्चे 340 140 किलोमीटर। 340 एक्चुअल मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। 3 साल के हाँ, बच्चे कई बार अपने मेमोरीज़ को लेके कन्फ्यूज़ होते हैं। डू यू नो अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फेक मेमोरीज़ मुझे पता और फॉल्स है। मेमोरी? मुझे मैंने खुद पढ़ा यार, क्या मैं होता ये है चीज बताओ? नहीं पढ़ू या मैं परविंदर, ये फे चीज। हाँ। फॉल्स मेमोरी क्या होती है बताओ? फॉल्स मेमोरी ऐसी मेमोरीज हैं जो हमारे ब्रेन में एक्चुअली होती नहीं है, मतलब एक्चुअली ऐसी चीजें हमारे साथ हुई नहीं होती हैं, लेकिन हमारा हुँ। ब्रेन उन मेमोरीज को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को उठा के। किसी So भी do चीज you को किसी think भी that चीज। your friend is it possible that your friend may be having a false memory? अगर सुनो देखो, 3 साल का बच्चा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अगर जितनी इन्फॉर्मेशन उसने शेयर की है और जिस पर्टिकुलर जगह के लिए की है, अगर मैं वहां जाके उस पर्टिकुलर एरिया में उस चीज को वेरीफाई करता हूं और उसी चीज का मिल जाना होता है, जो नेम्स उसने उसके दिए पास मुझे बहुत वही। टाइम था भैया, उसके पास 3 साल की उम्र के बाद 20 साल की उम्र में आपको वही उसने कहानी सुनाई है, उसके पास बहुत टाइम था। इट इज़ पॉसिबल
कि ए उसने फॉल्टी मेमोरी क्रिएट की, बी उसने उस फॉल्टी मेमोरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ फैक्ट्स पिकअप कर लिए, जो उसने अपने हम्म, नैरेटिव का हिस्सा बना दिया और आपने उस पर विश्वास हम्म। कर लिया जब आप गए और आपने चेक किया, बस। हाँ, ये सही, जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे जो चीज आप डिनाई कर रहे हो, सेम ऐसे ही डिनाई किया गया है आइन स्टीवनसन की स्टडीज को, ऐसे ही डिनाई किया गया है निमृत प्रीचा की स्टडीज को। ठीक क्यों है कि डिनाई ये किया हो गया गया बता होगा, सकते वो हो? हो गया। क्यों डिनाई कुछ किया नहीं गया है। है? क्योंकि जो हाँ, चीज़ डिनाई क्योंकि इसलिए तुम्हारी किया गया है क्योंकि जो क्लेम किया जा रहा है, वो हो नहीं सकता भाई। वो क्यों हो ही क्यों नहीं सकता, क्यों क्या प्रॉब्लम क्या है क्योंकि उसका होने? कोई एविडेंस नहीं है, उसका यार कोई हद होगी, एविडेंस नहीं है। हद होगी, जरूरी थोड़ी है ना अगर है जो तुम चीज। सिर्फ लोगों की बातों के ऊपर आके इन चीज़ों को सच मानने लगोगे, तो ये कैसे सच साबित मैंने होगा? कब कहा? तुम्हारे पास मैंने कुछ तो मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। सिर्फ इस मैं तो बेसिस पे लोग कि किसी ने कुछ कहा, किसी चीज़ को सच कैसे मान हम्म सकते हो? किसी ने कुछ कहा, मैंने उस चीज को सच नहीं माना, मैं बोल रहा हूँ वो क्लेम कर रहा है, ठीक है। अब मैं रिसर्च करने के लिए मेरे पास मोड ही मेडिटेशन है। ह्यूमन बॉडी को ही आप टूल की तरह यूज कर सकते हो, इसमें क्या करूं मैं? नहीं है मैं कोई टूल वही तो पूछ रहा हूँ, दूसरा। मुझे आपने अभी तक मुझे यही नहीं बताया कि मेडिटेशन से कैसे पता चलेगा कि अगला जन्म होता है? क्योंकि कैसे? जिसने जिसने क्लेम आपने किया है ना आँखें वो बंद की अ, अरे भैया मेडिटेशन की बात पे आओ ना, तुम मेडिटेशन की बात कर रहे हो। अगर तुम मेडिटेट करोगे तो ऐसा क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि अगला जन्म होता है? मुझे लगता है कि ब्रेन में सिर्फ आपकी फैकल्टीज जो है ना, जैसे आईज हैं, तो आईज से ही आप देख नहीं सकते, इसके अलावा दूसरी फैकल्टीज को भी एक्टिव किया जा सकता है। जैसे बेन अंडरवुड का केस है, दुनिया भर के दूसरे केसेस हैं जहां पे आपका जैसे ब्रेन, बेन अंडरवुड हाँ, का जो केस आया था। और एक्टिवेट करके क्या पता चलेगा? आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपनी फैकल्टीज से ही गेन नहीं कर सकते, दूसरे मेथड भी हो सकते हैं। बताओ ना कौन से मेथड हैं? कौन से मेथड हैं? जैसे आप, अच्छा एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग सिर्फ आंख से ही देख के हम परसीव कर सकते हैं चीजों को? नहीं, नाक से भी करते हैं, कान से भी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे सामने कोई चीज है, मेरे सामने अगर फैन है और मैं अंधा हूं, तो मुझे पता हुँ, चल जाएगा क्या मेरे सामने फैन है, अगर हवा मैं टच लगेगी। नहीं करूंगा तो तो उसको? आपकी चमड़ी भी एक सेंस है भैया, हवा नहीं लगेगी नहीं तो नहीं, पता चल चमड़े जाएगा। नहीं, बंद है, वो बंद है, चल ही नहीं रहा है। आप हाथ बढ़ा के उसको फ़ील कर सकते हैं और फीलिंग से मैं अंधे हाथ लोग भी नहीं वैसे ही बढ़ा चलते रहा, रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं उसके टच में नहीं जा रहा। फिर ओके, तो आपका पॉइंट क्या है? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ फिर मुझे पता चलेगा या नहीं चलेगा? अगर आपके पास आँखें नहीं हैं, नाक नहीं है, कान नहीं है और चमड़ी नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा। मैंने क्या बोला है? मैंने सिर्फ ये बोला है कि मेरे पास आईज नहीं है, ठीक है, मेरे पास हुँ, आंख नहीं है। अभी वो तो मेरे हवा कांटेक्ट में नहीं, वो चल ही आप नहीं रहा देखो, यार, फिर हवा। क्या मैं बोल नहीं रहा हूँ चल ही चलेगा? नहीं रहा। आपको हवा लगेगी ना, अगर आपकी चमड़ी है, अंधे लोगों को हवा लगती यार है। हद होगी, मैं बोल रहा हूँ कि वो चल ही नहीं रहा, तो हवा कैसे लगेगी उसकी? क्या फैन पंखा ऑन ही नहीं चल नहीं है रहा है? तो हवा कैसे हाँ, लगेगी? इन दैट केस आप अपना हाथ आगे बढ़ा के उसको फ़ील करके पता अरे कर यार सकते हैं कि फिर वो वही पंखा है। बात, मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसको टच ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर पता बट चलेगा क्या तो मुझे? भैया मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। अगर आप आँखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास चमड़ी नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, कुछ भी यार सेंसेस नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे पंखा है। मैंने क्या बोला है? मैं बोल रहा हूँ मैं कि मेरी किसी भी फैकल्टी को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं उसी का ठीक है, जवाब दे रहा हूँ, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा ना, तो बेन अंडरवुड का जो केस है, ठीक है, बेन अंडरवुड का वो कौन-सा केस है बताओ? बेन अंडरवुड का केस है जिसमें जिस लड़के को सिर्फ 3 साल की एज में ही वो जो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया है, उसने इको लोकेशन का यूज करके ये चीज प्रूफ की है कि हम बिना आंखों के भी इको लोकेशन से, जैसे दूसरे जानवर करते हैं, वैसे हम चीजों को। एको-लोकेशन के लिए कानों की ज़रूरत होती है, वो भी एक सेंस ऑर्गन है। लेकिन हमें तो नहीं लगता था ना कि कान भी ऐसे वर्क कर सकते हैं। पर कान सेंस ऑर्गन तो है ना? कानों का हाँ है। इस्तेमाल आप कह रहे हैं हाँ कि सेंसेस के बियॉन्ड चीज़ें होती है, राइट? कानों का इस्तेमाल सेंसेस के हाँ। बियॉन्ड नहीं है, वो कानों के वो सेंसेस के अंडर ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें अगर मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूं तो तुम प्रेडिक्ट कर लोगे तुम्हारे सामने क्या है? कुछ लोग कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, कुछ कुछ लोग कर लोग सकते होंगे। कर, अगर एग्जैक्टली दैट्स लोग व्हाट आई एम करते हैं सेइंग, कि हो परविंदर, सकता तुमने है। मुझे कहा भैया मैं भी यही परविंदर बोल रहा आपने हूँ। कहा कि परविंदर आपने कहा कि अपने सेंसेस के बियॉन्ड चीज़ें होती हैं। एको-लोकेशन इज़ नॉट हाँ समथिंग बियॉन्ड सेंसेस। इट स्टिल ठीक है। यूजेस योर ईयर्स, राइट? योर ईयर्स आर हाँ सेंसेस। हाँ सही है ना, कुछ लोग कर तो सकते मुझे हैं ना। एग्ज़ाम्पल दो ऐसी चीज़ का जो कि बियॉन्ड सेंसेस हो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कुछ लोग कर सकते हैं ना। भैया तुम पूछ रहे हो ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जो लोग करते हैं वो बियॉन्ड सेंसेस नहीं करते, उनका एको-लोकेशन कान से होता है। हाँ होता है ना, मैं भी यही और बोल रहा हूँ, कान होता है सेंसेस ना। होते हैं, वो बियॉन्ड सेंसेस के एग्ज़ाम्पल में नहीं आता है।
हाँ, बियॉन्ड सही है। सेंसेस का एग्ज़ाम्पल दो मुझे। मैंने क्या पूछा है? मैंने ये पूछा कर रहे हैं ना, कुछ लोग कर रहे हैं ना। मैं अरे इकोलॉजी जो कर मैं रहे हैं ये वो नहीं है जो तुम कह रहे हो। तुम कह क्या रहे क्या हो ये बियॉन्ड सेंसेस का एग्ज़ाम्पल है ना? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम तुमने बोल दिया कि आंखें बंद करके कैसे पता चल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है तुम कि हम उन भैया चीजों को तुम्हारे परसीव। तुम अपने खुद के आर्गुमेंट को ढंग से नहीं रख पा रहे हो। तुम्हारा आर्गुमेंट ये यार है हद कि है तू। हमारे यार सेंसेस के बियॉन्ड ये तो हद मैं ही तुम्हें है। म्यूट कर मैं रहा हूँ क्या ताकि बोल रहा मैं हूँ तो। तुम्हारे मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी मूर्खता को तुम्हें समझा सकूँ। तुम्हारा आर्गुमेंट ये है कि लोग बिना अपने सेंसेस के इस्तेमाल से भी चीजें नॉलेज गैदर कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल तुम दे रहे हो एकोलोकेशन। अगर एकोलोकेशन इंसान करते भी हैं तो भी वो सेंसेस का ही एग्जाम्पल है। तुम्हें मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें सेंसेस का इस्तेमाल ना हो रहा हो। अब मैं तुमको अनम्यूट करता हूं। तू हाथ लगाना छोड़। मैंने क्या बोलो। बोला था? मैंने क्या बोला था? मैंने आपने सिर्फ मैं ये फिर से बोल। रिपोर्ट करूं आपने क्या बोला था? फिर से बताऊं आपने क्या बोला था? हाँ, बताओ। आप कह रहे थे कि नॉलेज अक्वायर करने का तरीका सिर्फ हमारे सेंसेस नहीं होती, राइट? नहीं, मैंने ये बोला है कि आपने ये जिस कहा पे था। मैंने आपने ये मैंने कहा था। आपने हाँ कहा हाँ था कि ठीक हमारे है सेंसेस के ठीक। बियॉन्ड भी तरीके हैं, जिसका इस्तेमाल करके हाँ नॉलेज गैदर किया जा सकता है या हाँ नहीं? ठीक है। ठीक है, मैंने यही फिर बोला आपने है। मुझे एग्ज़ाम्पल दिया इकोलोकेशन का, जो उस चीज़ का एग्ज़ाम्पल नहीं है। तो ठीक है मुझे ठीक ऐसा है। एग्ज़ाम्पल दो, जो कि सेंसेस का इस्तेमाल किए बगैर नॉलेज पाने का एग्ज़ाम्पल हो। मैं ये बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहां तक हमें फिक्स कर दिया गया है कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, इसके सर मेरे बियॉन्ड सवाल का नहीं। जवाब दीजिए, नहीं तो मैं किसी और कॉलर के पास जा रहा हूँ। आप मुझे हाँ, सवाल तो का चले जवाब दीजिए। जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे इसके बाद। मुझे एग्ज़ाम्पल हाँ, दो ऐसी चीज़ का, जहाँ पे नॉलेज गैदर हो रही हो बगैर सेंस ऑर्गन्स के इस्तेमाल का। नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, तो नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो आपने क्लेम क्यों किया अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा हो क्या सकता है? ऐसा हो सकता है? अगर मैंने माना था कि मेरे कान 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकते या 20,000 से ऊपर नहीं सुन सकते, वो या मैं सेंस का इकोलोके। एग्जांपल है, वो फिर भी सेंसेस का हाँ एग्जांपल है। मैं क्या हाँ माँग मैं रहा हूँ आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ क्या? मैं माँग रहा हूँ एक ऐसा एग्जांपल जहाँ पे किसी ने नॉलेज गैदर की विदाउट अच्छा अच्छा, यूजिंग द मैंने सेंस ऑर्गन्स। मैंने मैंने अब तक नहीं नहीं नहीं, तुम भी पहले ही एक नोशन तुमने अपने माइंड में सेट कर लिया। मैंने कब बोला कि तुम्हें सोल जो है वो इमेटेरियल है? मैं तो सोल पे गया ही नहीं भैया, मैं तुम्हारे सिंपल क्लेम पे आ रहा हूँ। तुम्हारा मैं क्लेम तो था सिंपली मैं कि ये बोल रहा हूँ नॉलेज मेरे गैदर करने का लिए। एकमात्र तरीका हमारे सेंसेस नहीं हो सकते और मैं फिर ठीक है। तुमको अब मुझे उसका एग्जांपल देना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ना हम सेंसेस को ही बढ़ाते हैं, जिसके थ्रू हम जो आफ्टर लाइफ है, जो कॉन्शियसनेस आफ्टर बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, उसको हम परसीव कर सकते हैं। ओके, सो मेडिटेट करने पे तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए तुम अगले जन्म का हम्म। पता कर सकते हो। नहीं, मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरे आसपास जो भी अदर कॉन्शियसनेस है, जो कि ह्यूमन बॉडी के छोड़ने के बाद भी जो गोस्ट की फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में है, मैं उसको परसीव कर सकता हूँ। क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस जो बॉडी के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करती है, मैं उसको परसीव कर सकता हूँ मेरे सेंस आप ऑर्गन्स कर को ही सकते बढ़ा। हैं या कोई और कर सकता है? आप में ये मैं क्षमता है? मेरे अंदर मुझे लगता है कि मैं मेडिटेट करके वो क्षमता ला सकता हूँ, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्या क्योंकि आप लोग किसी को ऐसा कर जानते हैं रहे जो ये हैं। क्योंकि नहीं, लोग ऐसा कर रहे हैं या लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है? जैसे कोर टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, ऐसा कोई नहीं क्या करता पूछ रहा हूँ जो लेकिन। पूछ रहा है उसका भाई जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दो ना। आपको हम्म। ऐसा लगता है क्योंकि ये करके किसी ने आपके सामने प्रूव किया है या सिर्फ़ इसलिए कह रहे हो क्योंकि किसी ने कहा था? किसी ने कहा है मुझे तो। हाँ, तो दैट इज़ स्टिल एनेक्डोटल। इट इज़ नॉट योर यूज़ ऑफ सेंसेस और इट्स अ सुपरनैचुरल एनीथिंग। क्लेम। इट्स अ क्लेम। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मेडिटेशन को अब एज ए टूल यूज करना है, जैसे टेलीस्कोप हाँ, को तो यूज करते हैं। मेडिटेशन का इस्तेमाल करके सुनो परविंदर, मैं किसी और कॉल पे जा रहा हूँ। हाँ मेडिटेशन का इस्तेमाल करके मेरे साइड में जो पैराडीमन बैठा है ना, जो आपके दोस्त से झूठ बोल रहा है, उसको पहले डिटेक्ट कर लो, उससे बातें कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ें भाई, समझ में अपनी आ जाएँगी। कम्युनिज्म की जो सोच है ना, मेरे ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? चल, ये अब कम्युनिज़्म पे आ गया। अ, लेट्स सी हू द नेक्स्ट कॉलर इज़। कम्युनिज़्म में जैसे पैराडीमन होते हैं भैया। ये कनेक्शन आज इतना दुर्बल क्यों है वैसे? एनीवे Kingslayer, thank you for the 29 rupees. Jesu, thank you for the 179 rupees. He needs medication, not meditation with education. No, no, I think he's a reasonably smart person. He just gets flustered sometimes. Amit says, accidentally guessing correctly is still more likely than something unproven. Yeah, ये भी बहुत होता है. कई लोग तुक्के मारते हैं.
अगर कोई 1000 तुक्के मारेगा और उसके अंदर से 50 तुक्के लग गए, तो मतलब दे कैन क्लेम दैट दे नो समथिंग रादर देन नॉट नो समथिंग। Amit then says the most important census for me is the caste census. Census. Amit, thank you for the $15. Thank you. 10 plus 5. लेट्स सी प्राइवेट चैट में किसी ने बताया कि कोई इंस्टाग्राम से आया क्या? मैंने किसी को इंस्टाग्राम से बुलाया था। ओह हाँ, मोहित राणा। किधर हो? आज सब राणा ही आ रहे हैं। मोहित मोहित तुम्हारा डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है। अपने आप अपना डिवाइस फिर से कनेक्ट करो, मैं लेता हूँ तुमको। मोहित केम लास्ट वीक एंड ही वेटेड फॉर क्वाइट सम टाइम। सो होल्ड ऑन। डू यू गाइस थिंक आई वाज टू हार्ड ऑन परविंदर? आई थिंक जब कैमरा ऑफ होता है ना, तो जब कैमरा ऑफ होता है तो ज़्यादा अग्रेशन होता है, पता नहीं क्यों? मोहित 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 दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, किसी और को लेता हूँ, उसके बाद मोहित को लेंगे। जसीम, मोहित राणा, विमो, कॉन्शियसनेस, सोहेल। सोहेल को लेते हैं। हाय सोहेल। Yeah, hello, sir. How are हेलो, you? व्हाट्स अप? गुड, गुड, व्हाट्स अप? डिड यू कम फ्रॉम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन? Yeah. So I've been trying for past 3 weeks now, and today I got the chance to be in the private chat itself. Okay, cool, cool, cool. Continue. Sorry, I can't So show my face because the connection is weak. no problem for that. So I wanted to ask you, like, what has your journey been to be become an atheist? Like, before I think you were born in a Hindu family. So how you Mhm. became an atheist? I have made a long video about this, Sohail. I don't want to talk about it again, but मेरे No, main no. channel I'm पे like my if you my just go agenda to here is like, how can a proof of absence can be a absence of proof? it's not absence of proof. Sorry, I think you meant it the other way. No? Yeah, I am like proof for absence How for can proof. how can how can absence of proof be proof of absence, right? Yeah, I meant it other way. So Yeah. no, I don't think. I think that there is no God. I simply lack belief in the claims of other people when they say that there is a God. For that, I need evidence, and because there is no evidence, I lack belief in God. I'm So not like saying. My point humans is. My point is absence of evidence is not. Sorry, kya? I'm also confused about this. absence for Uh, evidence can be evidence for absence. yeah, so I'm saying it is not evidence of absence, but it is not evidence of presence either. For me, like, God is something that can be felt. How? And like, have you studied Like other in your scriptures in your along? in Like, your mind, no, not in my mind. Something like, then. I have my connection with my God simply because I pray daily five Hmm, times. hmm, hmm. So in that sense, I have connection with Him. He Okay. can't, like, So I've been a student of comparative religion as well. So I've Hmm. studied different parts of different scriptures, even the religion that existed before commercialization of religions as well. Okay. So, do you So think God has physical existence? no, God doesn't have physical existence for me. Okay. So, God what is your cannot be definition of God? What is your definition of God? Tell me. God, for me, a definition of God is something who was before Big Bang and who will be after Big Crunch. How do you know this? First of all, there is not going to be a big crunch, probably. I think our current understanding says that the universe will just peter out into a heat death. There is not going to be a big No, crunch. so the existence of human universe is for cause. So there cannot be an infinite line of cause. There has to be Why somewhere not? end. Why not? Everything is going to end, right? Even an atom has its expiry date. Yes, yes, but I'm asking your claim, your point is that everything has a cause. The Yeah, universe must also have a cause. If yeah. everything has a cause, then God must have a cause. No, Why God not? is the end of the cause, right? At the end, there is Okay, God. then why can't we simply remove God and say the universe is the end of the cause? Because universe cannot exist without itself. So there is a But God famous, can. there is a phrase in Quran which I've read. So Sohail. yeah, If the universe cannot exist without a cause, then how can God exist without a cause? God is someone who has been before the universe. How do you know this?
before, because I've read the scriptures. I've not read only one scripture, I've read other scriptures But as well. your scriptures are not proof of knowledge before the Big Bang, right? We don't know what happened before the Big Bang. No, Then but how do you know it that God existed? Then but it explains Big Bang, right? With how? today's No, it science, we doesn't. can't It's explain just a why the claim. Big Bang happened It or doesn't what was explain before Big anything. Bang. We know that the universe, space and time, as we understand it, began expanding at some point of time. And at that point of time, we call it Big Bang. We have Yeah, no no, idea it about what was happens after happening a before. big blast. No, there is no blast. There is no blast. That's a misconception. What happens is that space and time begin to expand. We call it a blast because somebody gave it a name called Big Bang at some point of time. It was a No, simple so expansion of space and according time. to There was no science, what was blast. before Big Bang? According to science, we don't know what was before the Big Bang. Exactly. So that what it is Then found in why are you saying scriptures. that you know? Then why are you saying that you know? No, I'm not someone who's no who is indulged in different kind of scriptures. I know cover to cover itself. No, I can interpret it. But I know some part of it, and I believe like God existed before the Do you creation of simply universe. believe that God existed or do you know that God existed? No, because there are different verses Answer which the can question, na, prove. Baba. Aye, Sohail, answer the question. Na. Do you Yeah, know that God existed or do you believe that God existed? I believe that God existed. So you don't know that God existed. No, how can I prove you? See, the thing Hello? is, a lot of people believe in a lot of things, right? We only Yeah. take them seriously when they have evidence for the things that they claim. And you cannot possibly have evidence for the existence of something before the Big Bang because science doesn't. No, exactly what I'm saying is, if a machine is made in front of you and there is no creator of it, it is in front of you and no one else knows about it. So who can tell what that machine does? Who can tell what the machine does? You Yeah. can So pick up a the machine machine and machine see how it hypothetically a works. machine is created. Let's for example, a machine is created, a torch is created, which no one Hmm. has ever seen before, and it is Hmm. presented to you, and who can tell how the torch work and what is the mechanism behind it? Okay, guys, I have turned off the webcam, but if there is a lag again, let me know. I'll turn it off again. Huh. If you have a machine in front of you, the best way to know how it works is to either have help from someone or just No, pick it up and press it is buttons and find created out. in front of you. It is By whom? created on By whom? by someone. Let's say How do you creator. know? A creator created a So created the a creator, created the creator is visible. You can, they can, they're standing in front of you. I'm giving a hypothetical example. So a creator created a machine in front of you. Who is the Hmm. who can tell that machine mechanism? Who can better understand that What machine is the exam? question? What is the question? A machine is created in front of you. Who can understand that machine better, the creator or you? I suppose the creator of the machine, sure. Yeah. So Because I can see the exactly. creator, right? In that No. example, you can see the creator. Here, you just have a machine. Yeah, you just have a machine. So creator tells you how that machine works. But you don't know if there was a creator. No, if the You just creator found the tells you, machine. You no, just if the found the creator machine. tells you how that machine works, then he How do you must know be it the was the creator creator? because he How knows did the ins and creator outs of tell you? everything. How did the creator tell you? In scriptures. No, how do you know the scriptures were written by the creator? So there is not a like you must be knowing the about Abrahamic faith, right? Yes. Abrahamic faith, Islam, Christianity, Judaism, they're Yeah, 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 interconnected in yeah. sort of a. Sort of. Yeah. Yeah, so if you read the three books like Torah, and Judaism is also having Injil, Torah, Injil, Bible, and Hmm. Quran. So there is a string of connection between them. Me Okay, as a Muslim, me as that a tells me Muslim, that I there are believe. that I don't care what you believe. I care what you No, know. no, I care yeah, what you know. yeah, If there are okay. a few books which have interconnected linkages, all it tells me is that there are some books which have interconnected linkages. So It tells me nothing about the truth of the things let me written in finish. those No, books. I'm not finished yet. Sorry for Okay, interrupting go on, because go on. so what I'm saying is, if before 200 years no one knew how a human embryo evolves. Yes, they did.
before 200, 300 years ago. Yes. How before we used to believe like There the are there are claims. I know this is a claim that Muslims sometimes make, but this claim is yeah, something Hindus also make, which is that there is some Vedic literature that shows us that a fetus is at this stage at this month and this stage at this month, but the etc. problem is And there is a The problem with Hindu literature is because Mhm. they can't see. If I bring something contradiction, they say it like it must be written in the British era, or it must be written in the Mughal era. See that I can say about Muslim scriptures also. Na, I'm not No, no, talking about you that. if you Listen, if you Sohail, bring a Sohail, verse from Sohail, Quran. Sohail. Let Yeah, me finish. My point is not that Hindus are right. My point is not that Muslims are right. My point is that knowledge of fetal development is very old. And do you know how people found out about it? no, It happened because miscarriages happened. Women sometimes, often, in fact, before the advent of modern healthcare, women died in childbirth. So sometimes, if the woman dies and the fetus is in the first trimester, you take it out and you see it. Then the next time you encounter a woman, she dies in the second trimester and you take out the fetus and you see it. oh, Women that's a have trial and died error method. It's sort of that. women have died at every stage of pregnancy, Yeah, yeah, sometimes in the like right before pregnancy, sometimes during childbirth. So yeah, human beings for a long time have had a frame of reference. They have seen fetuses. So multiple cultures on earth have an understanding of fetal development. That is where yeah, that knowledge comes from. It You don't need yeah. a god to know that. Hindus know it No, that way, Muslims also know it that way. Everyone who but knew it in ancient times knew it this way but there only. is no, there is no such from start to end. Even if I What? put a scholar, if I put a biologist, for example, from Mhm. like 1600s, he can't tell Mhm. what is going to happen after embryo. He can't tell everything. So I'm saying ki even the religious texts that say this, they had plenty of time to do this. Like it was No, accumulated knowledge of centuries before that. Your religion came see, into being a few centuries ago. The Hindu see, religion came into being a few centuries or some time before that. In both yeah, cases, human history is much longer. You think your religions are like revolutionary? There have been so many religions that existed before this. Humans lived on earth and did things and had languages and cultures that existed for thousands of years and then I don't evaporated believe because Islam of climate existed change. 1600 years ago. Islam existed from the inception of time. Oh, that So again, you Christ, that I guess it Christ, depends on the definition of Islam. yeah, Islam is I some when I when I talk about Islam, I'm talking about one religion. You when you talk about Islam, you're talking about it in the same way that Hindus talk about Sanatan Dharma. Every religion no. wants to believe that it There is is difference. eternal. There is difference because Christianity is Islam, because Christianity is Islam, Judaism Islam. It is all Islam, but throughout the time, because church got the power and the priest got the power, because knowledge was centered to priest and church, so they changed it. Did It's Islam not in the exist case before of human it's beings not in the case existed? of it's not in the case of Sohail, did Quran Islam because exist before human beings existed? yeah, So it existed among dinosaurs? no, it's Islam. No, not in that sense. Which what I believe is everything prostrates to God. Every everything. If you know, Sohail, my question is very simple. If you say that Islam has existed since the beginning of time, you're Yeah, talking about beginning the of Big Bang. yeah, You're talking about the Big Bang, right? yeah. Now, the Big Bang, when it happened, there was no earth, there was no people. Are you saying Islam existed then? Islam as a religion didn't exist then, but Allah did exist. How do you know this? We come back to my previous point then. How do you know this? By reading the scriptures, no. As Yeah, far as no, I know, again, it's you not haven't proof. read. It is not evidence. You have a book written a few hundred years ago by some people who have made some claims in it. There is no Not some evidence that people. those claims are true. He was an illiterate Bedouin, a There are illiterate shepherd. Muslims who disagree with you. So on this point, there are Muslims even who disagree with you. No, they There can are some disagree Muslims who think because that he was. There are some Muslims who think that he was not illiterate. Right? I'm not talking about any of that. I'm talking about what you mean by beginning of time. Beginning of times means Big Bang. No yeah, humans existed at that time. Therefore, you cannot possibly know about the existence of God. that what I said. Everything By the way, prostrates to God. is there any mention of dinosaurs in Islam? Is there any mention? I Of haven't dinosaurs? read completely. I don't know. I don't know about that. Oh, okay, okay, cool.
I don't know about that. Because to my best understanding there isn't. And because dinosaurs lived on the earth for a way longer period of time than humans have, it seems very difficult to think that if someone knew everything about human culture, about life, about the universe, how could they miss the dinosaurs? Islam is not the book for life. It's not a book of science. It's a book for life. There is a Okay, mention of few right now, things. It's it's is it your claim that Islam has nothing to say on science? Islam has Because no okay, so Islam. if it does I'm have not saying like I'm only asking, Sohail. I'm only asking because there are some Muslims who come and say that, yeah, we have predicted quantum physics, we have predicted, asteroids and everything. Is that, do you yeah. believe in that? It's written in Quran. Okay, then why not dinosaurs? I don't know if it's written or not. I will be honest. I haven't read it Okay, that thoroughly. why don't you read and come back and then we can talk? No, after this, I will do read it. But my Okay, point was a bit different. okay, Coming to what's my your point? previous point. Coming to Make my it, make this your last point, huh? I'll move on to someone else after this. yeah. Coming to previous point about the creator. So there is Hmm. no one such specification about human embryo or embryology. There is a verse mentioning Knowledge how the again, I metals thought you were came going back to how the the water creator. came on earth. I thought you were going back to the creator. I already talked about the embryo. It is ancient No, human no, knowledge picked up by human beings. I'm completing that point. I'm completing my Okay. point. It's like if a creator makes something in front of you, he is the one having a better understanding. If he writes in a book, then he must be a creator because he knows before human knew. But how do you know the book was written by him? You found a machine in the forest and there's a book next to it. Yeah, How do you know someone else did not write it and put it there? because there is documented history of. No, you found the book, right? In your metaphor, there is no Yeah, documented history. There's a machine and there is a book. Let's remain within yeah, your metaphor in order to make sense. yeah, You yeah. found a machine Okay, and you found a book. How do you know that the book was written by the creator? because there was no one else to write it. What? If No, 1400 years ago, there were no people to write a book. no, in my metaphor, I was the only person there. You were the only person there. Okay, Yeah, so yeah, let's break down your metaphor. You are you. The machine yeah, is the universe, right? yeah. And your creator gave you this book 1400 years ago, despite the fact that the universe has existed for billions of years. There have It's been not. thousands of religions before this religion, and for some reason you think that this book is the manual that explains the universe. Many other religions have books. Hindus have books. There are many African religions which have descriptions about where the universe came from. Why would you not believe any of that? Because as I said, Christianity and Judaism at its core are same. Just Christianity, like Judaism, and Islam are one tiny fraction of world's religions. They are in fashion now, but when they were not, there were other religions. Hinduism is one of them. Buddhism is another one. There are many, many, many pagan religions. Before what we know as modern civilization, there used to be Indus Valley civilization. Before that, because there used to that be other creator cultures itself in sent Central his Asia. messenger to each and every civilization. Each and every But civilization got its that is messenger. again a claim, Sohail. You don't even know if God exists. You're making random claims. This is just, I'm not you making a know, random claim. making up What I'm stories saying and is saying, this is just making up stories and saying, yeah, this is the story that I like best, so I will believe it to be objectively true I'm not, description like of reality. I read other religion as a way of believing because I don't want to be the person who blindly got his faith. No, I No, no, you inherited got my your faith faith from from your my family, father. Sohail. Were you born in a Muslim family? Yeah, Do you think it's a huge coincidence that of all the religions that you could be born on earth, you were born in the family that follows this religion, and somehow miraculously you came to the conclusion that this is the only religion that is true? You think so there is no what you suspicious angle here? in that case what we will speak about Justin Barrett's research on believing in one god in Oxford University. I know that we have research that says that human beings are born with certain Yeah, inclinations programmed towards to believe theism. in one true god, But and Islam is the only we are monotheistic also religion. born, programmed with tendencies towards diarrhea, cancer, and a whole lot of things. Just Yeah, because we yeah. have something naturally doesn't mean it No, must be good or no, true. like on a large scale, if you see, what we believe is everyone is born with a tendency to believe in one true God.
First of all, Because that is not true. Secondly, even if I accept it to be, first of all, there are tribes on earth who went thousands of years without any conception of God. There is a there is a tribe in whole South written America. research from a very reputable, I think, the top institution in this I'm world. trying to explain that only, Sohail. Give me some time. Yeah. So there is a research called hyperactive agent detection. Have you heard of it? No. So hyperactive agent detection says that the reason we have the tendency to imagine agents, as in conscious agents all around us who do things like God or ghosts or spirits, is because it was a useful evolutionary advantage. Because if you're going through a forest and there are bhalus and snakes there, Yeah. if you believe in bhoot pret, then you will become alert. उससे कुछ फायदा नहीं होगा, पर उससे फायदा ये होगा कि you have become alert, and because you are alert, you will be better suited to fight bhalu and snap, and you'll not fall in a ditch. So No, believing in that conscious belief I agents. got it from my Sohail, society. let me finish. Let me finish. I'm talking about how this concept came into being in the beginning of human society, according to certain research. Now, am I 100% So sure about this? No. But it is definitely a better explanation than a God who existed before the Big Bang, about which we don't have any evidence. the evidence is, have you read any other scriptures? Even Yeah, no, even I've read some parts of it. Have you read all scriptures? no, I'm only 17, I'm starting to read, but I have read parts of So have Bible, you read? half of Have you the read Bible, for example. have you? So I don't need to, right? If you can come to the conclusion that Islam is one true religion without reading all the other scriptures, then I can come to the conclusion that there is not sufficient evidence for God without reading all the scriptures. Because for me, the concept Because of अरे भैया मैं जो polytheism बोल रहा हूँ, doesn't are you make even sense. listening to what I'm saying? ये तुम Yeah, अपने yeah, ही tangent पे जा रहे हो. yeah, yeah. I'm listening. I'm listening. हाँ. No, So I believe जो मैंने Islam बोला उसका because जवाब for दो me ना. the concept of polytheism doesn't exist. क्या क्या क्या? The concept of polytheism, हाँ. Islam is the only monotheistic religion. That I don't really want to debate with you, because yeah, I think what you mean is that Christianity is really polytheistic and not really Yeah, monotheistic, the right? Trinity concept. Yeah, yeah, Same yeah, yeah. happens So with I get Judaism. that. I get that. I get that. But that is not even the point. Regardless of whether you are a monotheist or polytheist, it doesn't matter because there is no evidence for God. I already said that there is no physical evidence of him. Then what kind of evidence do you have? There is no physical evidence of lots of things. Then what A kind of evidence do body, you our have? body, for example, is the most complex machine there ever could be. No, that's not true. Do you agree with You're that? defining, you're looking at our body and you're describing it as complex because you're a human being. There are other things that are more complex than our body. Quantum What could be more mechanics. complex than our body? We are running into complex theories every single day in science. No, I You mean are our talking body. about the We human don't. body. We if we You're go talking by about the human example of body some and of the you're describing biologists, we don't Sohail, know Sohail, complete or yeah. Sohail. There are plenty of things that are complex in the universe. Do you think the human body is more complex than the universe? No, Then I I'm mean, saying ki in our exploration of the universe, every day we are finding new and exciting things. And complexity is a subjective measure in that respect. If you look at human history, if you look at the history of life in this universe, if you look at quantum mechanics, there is complexity everywhere. so Why would you choose the human body as an example? There is only one reason, and that is because you are human. You want to feel special. there could be I'm biased about my own body. Yeah, Hmm. so it it is because for me right now the most complex thing in my surrounding is my body. Do you agree What? with that? Repeat, repeat. The most, if you're sitting in a room, the most complex things around you is your body. That again, as I mentioned, it depends on your definition of complexity. But sure, I'll grant it. Com- Go on. उसके बाद क्या? What yeah. next? So if other things as complex, like, for example, if your computer can't exist without itself, how can a body exist without itself? Is it because the How can a body space exist does without itself? मतलब, what do you mean? How can a without body its without creator? without its creator? I Yeah, don't think I have ever seen any evidence of a body being created. Human beings are born, right? yeah, born. हाँ, तो how am I But there is a created then? process. There is a process in which it is born, and that हाँ, and process is that process, completely, and that process with along with many other scientific things we are understand that already mentioned. process. There is no need for God in that process. A man meets a woman, they go out on a dinner, they eat nice food, they come back, they smile at each Yeah, other,
एंड देन सम स्टफ हैपेंस एंड देन देयर इज़ अ बेबी। उसमें गॉड का कहीं नीड नहीं है। God was the one who created it at the start. हाउ डू यू नो दैट? दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन आस्किंग। Again. You So are making as a you said, claim as you said, for you which you haven't have read any no scripture. evidence. You haven't read any scripture. I have read some scriptures. If I make a big circle in front of you, how much you Hmm. know? How much you know in that circle? How much sect you know in that circle? Sohail, this appeal can go both ways. You also have not read any scriptures. उससे क्या फर्क पड़ता है? Have you read all scriptures? No, Then why are but you asking me how many scriptures I've read? I've read most You are part asked of me it. you are asked me this 3 times, and each time I keep pointing out that if you can come to the conclusion without reading every scripture that God exists, then I can come to the conclusion that there is not sufficient reason to believe in God without reading every scripture. For me, reading that all scripture made me believe in the concept of monotheism. But you have not read all scriptures. Now I've read, as I said, I've read parts of Bible. I've read Genesis, Matthew, Book of Matthew, हाँ, वो सब and मैंने भी पढ़ा है भाई, वो मैंने भी पढ़ा है, and I did not come to the same conclusion as you. I have read parts of the Bible, I have read parts of the Vedas, I have read parts of the Quran, and I did not come to the same conclusion as you. So what part clearly, of that is Quran did you not the read? method. So that I don't remember, and it's not even important. The point I'm trying to make is that it is not sufficient grounds to come to the same conclusion as you. No, there is sufficient research that concludes that monotheistic faith. What research? One is of Justin Barrett. What does it You can look conclude? up. It concludes that a child is born with a belief in one God, and that what we I believe. told We you that believe. is not evidence. That is not evidence. We are also born with a tendency towards cancer. What does that prove? Yeah, we are believe with tendency of cancer because everyone has their own path of to lead a life. So if a child is getting cancer, it's from God itself. If a No, child is that was. leaving, अरे मैं कह रहा हूँ कि just because you are born with something, does it make it true? yeah, If you are born, why if not? some people are born without any conception of God, does that mean that God does not exist? How can someone be born without There a are concept people. unless and until he's an You should do your research. And there is a tribe in South America, जहाँ पे एक Jesuit priest गया था, and he kept trying to convert them, and they just laughed at him because they just thought he was telling stories. They had no conception of a God. because for them the God must be in trees. For them the God must be sun. For them the No, they God didn't. They must be just thought of mountain. trees as trees. They did not have a conception of a creator God. Yeah, that could be because of their surrounding. Again, you are atheist What? of your surrounding. You are Yeah. atheist Would you? because of your surrounding. I'm an For atheist because of my surrounding. If I was atheist because of my surrounding is completely Hindu, boss. In a Hindu family surrounded by temple culture and everything, I'm not an atheist because of my surroundings. yeah, I'm an because atheist of the because I society. questioned my One day surroundings and my conditioning. you challenged your belief and you didn't got a proper answer from anything, so you became a non-believer. Is that Not right? really. It was more complex than that. I made a longer video about it. You can go watch it. But Yeah. do you So think that's a good thing? Do you think challenging your beliefs is a good thing? no. The first verse revealed in the Quran itself is zikra, which means read. Huh, so even the Vedas say that, something like that, read more and understand more. The Buddha says all that also. I'm sure you can find something like that in the Bible also. Yeah, My point is, you have not examined your beliefs sufficiently. You still think that I the have religion that you were examined. born in, you As still far think that the religion that you were born as I in know, is the I only have true examined my religion. belief ins and out of everything. I've नहीं challenged भैया, my अगर belief किया with होता तो every. तुम अभी you don't think it's a huge coincidence that of all the studies that you have done, you came to the conclusion that the religion that you were born in is the right religion. It's a massive coincidence, isn't it? Earth is this many years old. So many religions have come and gone. You came to the conclusion It's कि not मैं जिस as परिवार massive. में पैदा It's हुआ not as वही सच massive है. as believing that the Earth was created and suddenly Earth was created at the right temperature with the right gravity, Earth and was the not Earth created. was We know created. how the Earth Earth came was into being. We know about geology. We know about cosmology. We know how the Earth came into that's being that, with that's not reasonable fact. That's certainty. theory, right? It's all No, no. theory. There is one theory based on evidence, and there is one theory based on nothing except a fairy tale. So which one should I believe?
the theory is still a theory. If it is fact, There I is a will agree difference with between a theory that is just a guess and a scientific theory that is based on top of tons of evidence, geological evidence, that. fossil evidence, A theory, cosmological evidence. a theory could be proven What otherwise. cosmological or fossil evidence can you provide for God? A theory can be proven otherwise. What? Do you agree with that? A theory Yeah, can be sure. proven Yeah, otherwise. yeah. Do you agree So with is that? there any good? So tell me, can you? Is it possible for God to be disproven? No. Then it's not a theory, is it? Yeah, it's fact. No, it's not a fact. Obviously, it's not a fact. You don't know what it is. You just told me that you don't know, you just believe, and now you're saying it's a fact. If it's a fact, then you know, right? And Yeah, if you know, you because should I be know able to tell what me it how is. you know. If you know, you should be Because able I to know tell me what how it you is. know. Again, I'm saying it because I have my connection with my God, That's not and evidence, boss. That's beta wo evidence nahi hai. If you are saying that you know, then you should have evidence. And if there is no evidence, you cannot call it a fact. It's as simple as that. you know that is what I started the whole debate with. Can a What? proof of evidence and can a absence of evidence could be evidence of absence? No, but it also cannot be evidence of presence. Yeah. So In order to you must establish the truth of something, you need to give me you evidence. I 100% agree with you. It can't be an Hmm. evidence of presence, but you have to go on that journey to find that evidence. I did. That's why I'm an atheist. I could not find anything. And you went on that journey and came to the conclusion that your family religion has always been right. You know, for me, I have been raised in predominantly hardcore Sunni family, Mhm. and I And don't that believe in explains that a lot. concept. That explains a No, lot. no, I don't believe in that concept now. हाँ, तो You know, you went a little left और क्या? मतलब you were brought up in a Muslim family. Shia Sunni फर्क नहीं पड़ता. You were still indoctrinated with all the things that a Muslim family might believe, and you came to the conclusion that you are right. This is like me saying कि I was born in a Hindu family. They believed in Vishnu, but they were wrong. I went on my personal journey. I came to the conclusion that Shiva is the real God. Would but you at take the me end, seriously if I said that? no, for me, you haven't researched much, Yeah, and you exactly. can say For me, you haven't researched same much. for me. You are You can you are a say Muslim same for boy me, in and a I will Muslim say family who thinks that Islam is correct. Islam. एनीवे सोहेल मैं अगले कॉलर पे जा रहा Yeah, हूँ, ठीक है? बहुत टाइम हो गया। कम बैक नेक्स्ट वीक इफ यू वांट टू एंड वी कैन टॉक सम मोर, ठीक है? okay. I will चलो, do गुड suggest you to कन्वर्सेशन। read that paper of Justin Barrett, ओके, आई विल डू please. दैट। थैंक यू सो मच। गुड कन्वर्सेशन। Yeah. गुस्सा मत होना, ठीक है? No, no, I'm still ठीक है, learning. चलो। यप, सो एम आई। बाय-बाय। दैट वाज़ सोहेल मोगैम्बो। अरे ये कनेक्शन को क्या हो रहा है आज? आई होप कनेक्शन आई होप पीपल कैन हियर एवरीथिंग राइट? द ऑडियो इज़ ओके राइट गाइज़? आई एम गेटिंग पैनिक अटैक हियर। ओके, लेट्स सी हू एल्स। अरे ये सत्यम झा अपने पिताजी के पैसे फिर से वेस्ट करने आ गया। सत्यम इज अ बॉय हु डज नॉट एग्री विथ मी बट ही सेंड्स मी अ लॉट ऑफ मनी। सत्यम, आयोन्स इंस्टीट्यूट के हेड बोले थे कि जो एथीस्ट साइंटिस्ट होते हैं वो हर उस रिसर्च को बिना रीजन के रिजेक्ट कर देते हैं जो रिसर्च गलती से भी किसी रिलीजियस कॉन्सेप्ट का हिंट करता है, प्रोबेबली बिकॉज दैट रिसर्च सो कॉल्ड डज नॉट कम विथ एनी एविडेंस। जो एथिस्ट लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा डायमेंशन का एविडेंस नहीं मिला है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पैरानॉर्मल रिसर्च को सपोर्ट करने को यही बस इसका एविडेंस दे सकता है, बट एथिस्ट डोंट सपोर्ट। पैरानॉर्मल रिसर्च होता क्या है? इसके बारे में कोई साइंटिफिक पेपर कहीं छपा है? इसके एविडेंशियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? कुछ भी नहीं है। खाली पैरानॉर्म किसी चीज़ को रिसर्च बोल देने से वो रिसर्च नहीं हो जाता। साइंटिफिक रिसर्च किसी भी तरह का हो, उसे कुछ नया डिस्कवर होने पर सोसाइटी का भला ही होगा, इसीलिए ऑनेस्ट पैरानॉर्मल रिसर्च का हो तो कुछ तो एविडेंस मिलेगा एक्स्ट्रा। हाँ, तो करो ना भाई, किसने रोका है? सत्यम, यू गो डू पैरानॉर्मल रिसर्च इन अ वेरी ऑनेस्ट वे एंड टेल अस हाउ यू फाउंड आउट एंड पब्लिश अ साइंटिफिक पेपर डेमोन्स्ट्रेटिंग द ट्रूथ ऑफ व्हाट यू फाइंड आउट। खाली बोलने से क्या होता है? जॉय बॉय, थैंक यू फॉर द 40 रुपीज। सत्यम अगेन, डिस्कवरी चैनल का एक शो है एक्सपेडिशन एक्स बाय जॉश गेट्स, इसमें घोस्ट का एविडेंस दिया है। रिसर्च डिस्कवरी चैनल पे नहीं मिलती भाई, उसके लिए साइंटिफिक जर्नल में पेपर छापना पड़ता है, जिसको पीयर रिव्यू किया जाता है, जिसके मेडिसिन जिसके मेथोडोलॉजी को एनालाइज किया जाता है। ऐसे नहीं होता है।
डिस्कवरी चैनल और यूट्यूब साइंटिफिक रिसर्च का सोर्स नहीं हो सकते। कृपया इनके ऊपर रिलाय करना बंद करो। विक्रम, थैंक यू फॉर द 100 रुपीज़, मच अप्रिशिएटेड। सत्यम अगेन, डिस्कवरी सत्यम तो पैसे वेस्ट कर रहा है भाई। सत्यम, आई एम गोना बैन यू इफ यू कीप सेंडिंग मी मनी नाउ। You are wasting your father's money or your money if it be, and I don't feel good about it. You disagree with me, and yet you spend this much money. Unless you are doing a back charge on your credit card, which is okay, I guess, but don't waste money like this. James, thank you for the 40 rupees. Galen gave embryology in 2nd century AD. Satyam, if you send me money one more time, I'll ban you. Okay? I can't believe I'm saying this, but if you send me money one more time, I'll block you. Right. देखते हैं अभी कौन है। Blesson Jacob Sunil wants to debate morality. Hold on, Blesson. Let me see if Mohit is back. Mohit. हाँ, Mohit is here. Hi, Mohit. बताइए। हेलो। हेलो, म्यूजिक बंद कर लो। एक मिनट। म्यूजिक बंद कर लो, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा भाई। हाँ, बोलो। मोहित, go on. You're on mute. I don't know why. मोहित, हेलो। मोहित बैकग्राउंड में अभी गाना बज रहा है। एक मिनट। हाँ, अब बंद हेलो। हो गया। अब बंद हो गया। हाँ, अब बंद हो गया। आवाज आ रही है हाँ, मेरी? बोलो। आवाज आ रही है, बताओ। हाँ तो पिछली बार मैंने उसके ऊपर बात की थी, कॉन्शियसनेस के ऊपर। हम्म। याद है आपको पिछली बार, पिछले सैटरडे? हाँ, याद है, पर तुम युगा साइकिल्स के बारे में कुछ बोलना चाहते थे। उसके ऊपर तो मैं चलो बाद में आऊंगा। पहले पर तुमने प्राइवेट चैट में आप वही लिखा है। तुमने प्राइवेट चैट में लिखा है कि तुमको युगा कॉन्शियसनेस कुंडलिनी एंड युगा साइकिल्स पे बात करनी है। हाँ उस पर भी करनी है, पर पहले मैं इसके ऊपर जो पहले जो बात रह गई थी उसको करता हूँ। अच्छा, ये जो कुंडलिनी के ऊपर आपका क्या बिलीफ है, मतलब क्या सोचते हो आप? उसका कोई एविडेंस नहीं है सर, यही है। अगर एविडेंस नहीं है तो मानने का कोई तुक नहीं बनता। तो जैसे अगर मान लो आपने कभी ट्राई किया मेडिटेशन को और आपने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, फिर एक्सपीरियंस मतलब जैसे मेरे आपको मन में कुंडलिनी मैं कुछ फील करूंगा। जैसे जैसे कुंडलिनी में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे तुमने एनर्जी किया है? राइज होती है आप। तुमने हाँ किया है? ओके, हाँ, एनर्जी राइज का मतलब बताओ। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कुछ पिछले साल की ही बात है, ठीक है? तो मेरे जो बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ से, यहाँ से कुछ जैसे कुछ एनर्जी से राइज हुई थी। उससे 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 2 दिन पहले मुझे बुखार आए थे 2 दिन तक बुखार रहे थे, ठीक है? तो मैंने दवाई नहीं ली। मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरी बॉडी फाइट कर लेगी, कोई नहीं, ऐसे मैं दवाई नहीं ली थी। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ, मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे से कुछ एनर्जी सी राइज की, जैसे होता है ना, गर्मी से लगती है। तो मतलब गर्मी एक राइज की एनर्जी लग। तुम सुनो। हाँ, अरे यार, ये जैसे हरदीप गोस्वामी बात। मैं कह रहा हूँ कि तुमको अपने रीढ़ की हाँ हड्डी के नीचे एक गर्मी फील हुई। हाँ, एनर्जी फील हुई। नहीं 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 वो नहीं नहीं मेरे नहीं नहीं हेड नहीं 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 नहीं, रुको रुको हाँ रुको रुको रुको। तुमको गर्मी फील हुई हाँ, रीढ़ की हड्डी के नीचे। तुम उसको एनर्जी कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो एनर्जी थी या गर्मी नहीं। तुमको गर्मी फील हुई। थी, एनर्जी कैसे वो बता रहे हो राइज की, उसको? और तुम नहीं, मोहित, आई एम ट्राइंग टू से समथिंग वो इंपॉर्टेंट। दिस इज एनर्जी थी इंपॉर्टेंट। जो तुमको वो कैसे एनर्जी पता? थी जो गर्म थी। हाँ, हाँ, मतलब गर्मी थी ना। तुमको अपनी आपने रीढ़ की हड्डी बिजली के का नीचे झटका कभी वहीं लिया पे हुआ है? थोड़ी। मतलब ऐसे थोड़ा सा छोटा सा हाँ, लिया हुआ कुछ है तो सर। लगा होगा कभी अनफॉर्चुनेटली नहीं जिंदगी जोर में। का भी लगा है मुझे। जोर का भी लगा है। हेलो मोहित। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ लगा है ना, वैसे हाँ, बिल्कुल वैसे ही राइज की, अच्छा, समझे? राइज की क्यों बोल रहे हो? तुम ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुमको अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक हेलो झटका लगा जो कि बिजली के झटके जैसा था? हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मोहित, तुम्हारे कनेक्शन में कोई इश्यू है भाई, या तो मेरे कनेक्शन में हेलो इश्यू है? क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आई कैन हियर यू बट आई थिंक यू कांट हियर मी।
लगता है मोहित के इंटरनेट कनेक्शन को भी झटका लग गया। मोहित सुनाई दे रहा है? तुम म्यूट पे हो अभी। ओके, मैं मोहित को हटा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। लेट्स सी। वेट, वेट, अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ओह सॉरी, हाँ। लेट्स सी। Geeky Data Wiz, thank you for the 5.99. I think this is Euro. Vimoh sir, could you please talk about how an atheist can fill the gaps which religion used to? Like when you talk or when you're scared or hope. This is interesting. See, here's the thing. मैंने बहुत टाइम से बोला है कि religion does fill some gaps in human society, and a lot of atheists simply want to give people, religion छोड़ दो without offering anything in return. तो हमको ये इस बात पे भी थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए कि लोग अगर रिलीजन छोड़ दें तो करें क्या। तो हमको ये इस बात को प्रमोट करना चाहिए कि जो मीनिंग लोगों को रिलीजन से मिलता है, होप और डर से जो बचने के मेथड्स मिलते हैं, इनके सेक्युलर सोर्सेस भी हो सकते हैं। थेरेपी हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, लाइफ में मीनिंग पाने के दर्जनों जगहें हो सकती हैं। उसका सोर्स सिर्फ रिलीजन नहीं है। और अगर कोई सिर्फ रिलीजन को उसका सोर्स मान रहा है, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि तुमको ये सब सिर्फ रिलीजन से मिले। सो वी शुड प्रमोट पीपल टू डेवलप लाइव्स दैट आर बियॉन्ड रिलीजन। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि रिलीजियस हैं, बहुत रिलीजियस हैं, पर अगर मैं उनको कहूँगा कि रिलीजन छोड़ दो, तो मुझे भी पता है उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। क्योंकि उनको बचपन से रिलीजन के ऊपर इतना रिलायंट बना दिया गया है कि वो रिलीजन को छोड़ के किसी और सोर्स से कुछ उम्मीद कर ही नहीं पाते। उनके लिए बस यही रह जाता है और कुछ बचता ही नहीं है। सो हमको एट ए यंग एज हमें बच्चों को ये बताना होगा कि लाइफ बहुत सुंदर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, डाइवर्स है। लाइफ के जो लाइफ का जो ये है, लाइफ के जो सोर्सेस हैं इंस्पिरेशन के, तुम कहीं से भी ले सकते हो। कुछ लोगों को एकेडेमिया में जाके शांति मिलती है, कुछ लोगों को माउंटेन बाइकिंग करके शांति मिलती है, कुछ लोगों को अपने हॉबीज फॉलो करके शांति मिलती है। मैं ये जानता हूँ कि मुझे पढ़ के बहुत शांति मिलती है, पढ़ के और म्यूजिक सुन के। दीज आर ऑल गुड सोर्सेस। पर नहीं, हमें शुरू से ये बताया जाता है कि रिलीजन में कुछ खास है। अगर हम यंग एज से लोगों को इस बात को कन्विंस करेंगे कि रिलीजन तुम्हें कुछ शांति देता है, श्योर, बिकॉज इट्स गुड स्टोरीज, बट ये शांति रिलीजन से मिले ये ज़रूरी नहीं है, दूसरी जगहों से भी मिल सकती है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। थैंक यू फॉर द 5.99 euros again. Percy, thank you for the 40 rupees. Vimoh, Marxism and socialism are same thing. Marxism is what Marx taught. Socialism is the eventual social goal of Marxism. They're not the same thing. I will have an expert on the show sometime soon. We will talk about Marxism and socialism. GP Vajrang, thank you for the 10 euros. Much appreciated. Thank you very much. Let's see if Mohit is back. Mohit, एक और चांस दे रहा हूँ तुमको, अगर ऑडियो फिर से प्रॉब्लम आया तो। अरे मोहित कहाँ गया? नहीं, मोहित हमारे बीच में नहीं रहे, एंड बाय दैट आई मीन दैट ही सिंपली नॉट कनेक्टेड एनीमोर। लेट्स सी। आई एम श्योर मोहित इज फाइन। लेट्स सी। Balbir says, must I have a debate with you in order to talk to you? No, Balbir. Yeah, you're online. Go on, talk. Balbir, you're online. Balbir, can you hear me, Balbir? No, Balbir की तरफ से कोई ऑडियो नहीं आ रही। I think they're away from their computer. Okay, let's take Shekhar Bhattacharya. Hi, Shekhar. Hey Vimoh, Hey, what's up? all good, all good. I didn't I didn't क्या type चल रहा any है? topic yet. I was just going through the messages, so I guess nobody क्या else क्या? did. I haven't typed any topic yet, or have I? Okay, go on. It's okay. You can just start here. I mean, I have one point maybe. So usually when I have discussions or debates with right-wing supporters, about the revolution, Indian revolution and freedom struggles, so Hmm. usually they don't have a lot of क्या बोलूं, people or freedom fighters from their side. But if you bring out people like Gandhi or Nehru, for Gandhi they start the discussion with his sexist scandals, for example. Hmm. And from today's standards, I mean not today's standard, from any standard,
Yeah, if you start a discussion with sex scandals, you're already on a kind of a back foot. How do you deal with this? My usual method is, first of all, like, the people you're talking to, are they like liberals or members of the Dalit Bahujan Adivasi community, or are they right wingers? Uh, yeah, right wingers, but I mean right wingers also who think Savarkar was a revolutionary. Yeah. So here's the thing. The thing about Gandhi is that it is true that he had failings. It is true that there are things about him that are less than perfect. My response always is that Gandhi was a human being and he had many failings, including the ones that you just mentioned. Yeah. But I make a distinction between criticism that comes from right wingers who are Godse worshippers and criticism that is coming from the Bahujan Adivasi crowd who are criticizing Gandhi because of his casteism sometimes, right? Mhm. So the former, the one that comes from the right wing, I don't take it seriously because I know their motivations. The latter that comes from Bahujan quarters, I take seriously because I understand how much damage it has done to them. And secondly, after you have done all of this, just acknowledge that sure, he was a human being, but we don't need to put a person on a divine pedestal in order to for them to in order for you to say to those people who talk to you that no, democracy and everyone living in peace is a good thing. Yeah, exactly. Because if their criticism of Gandhi is the sex scandals, I'm pretty sure you also can find sex scandals in their heroes, Yeah, I mean, right? the point was that yes, Gandhi was a human. He had a lot of flaws, supporting Mm. casteism, having some thoughts on some Yeah. regulated. What's the Yeah, go on, Shaker. hello? Go on. Yeah, having some regressive thoughts on the black people in Africa. So he had his flaws, but when you in a discussion, you just ignore everything that a person has done just to focus on his sex scandal, and then Yeah, just yeah, put your people up front that Gandhi didn't do anything, Savarkar and all yeah, did all that. yeah. It's a bit frustrating, In fact, to be honest. In fact, you like, how important is it for you to use Gandhi in your conversation? It can't be that important, right? You can No, just say, it's not important, but I, I as a human being, an Indian citizen living in the 21st century, think that there are definite benefits to all of us living in peace without any communal disharmony. Surely that does not need Gandhi, right? no. I think the best way to have these conversations is just to say, I think this is a good idea, and here are my reasons. We don't need to appeal. If you say that a certain way of democracy, a certain way of governance should be followed because falana person said this, you're already on a weak footing. Yeah, I guess the intentions are already clear for those. Yeah. Cool. Okay. Is that all? Yeah, that's kind of a rant, not a pod discussion. But the second Okay. point for me would be why did you choose to be an agnostic atheist and not just an atheist? I didn't choose it. I kind of fell into this position by default. Agnostic means I don't know. Right. Atheist means I don't believe. Right? So I don't believe because I don't know. It's as But simple as that. doesn't it open kind of a Pandora box? Then you have to say that you're agnostic about almost everything that another person comes up with. No, it doesn't. I think because the way we come to conclusions about things, like for example, if there is a remote control in front of me, damn it, this is the time when I had to lose my video. If there is a remote control in front of me, I 100% sure that this is a remote control? No, I can't be, right? But I have a reasonable amount of certainty that it is because I have seen remote controls. This thing functions like a remote control, and there is no real reason for me to deny its existence, right? With Okay. God, I have to say that I'm agnostic because there is no information at all. With the remote control, I have some information. Even if we had, if we had seen 5 universes being created by God and then we had no idea how our universe came into being, I would say, yeah, it's reasonably certain that a God must have made us. But there is no evidence of any kind about this universe being created by a God. So I have to, by necessity, say that I don't know. Because to say otherwise, that I do know that there is no God, would be to make a positive claim, and I cannot do that. So it's more like a skeptic view of looking almost all everything around you. No, it's not. I'm saying ki agnostic atheist means the kind of atheist that I am. I lack belief in God, and the reason behind that is that there is no evidence, so I don't know. Mhm.
I'm not saying there is no God, because I can't know that either. Okay, I mean, but that's my point, that we cannot know a lot of things that almost everyone comes up with, right? Like ghosts or the powers of meditation, apparent powers of meditation. But that depends on the kind of person you talk to, right? If someone said ki there is this remote control in front of me is God, I'll say sure. If that is your definition of God, then God exists. But most people provide a nominal definition of God, which is the being who is intelligent and who created the universe and who exists outside of time. And there is fucking no way I can know any of that. But you The can also remote I just can know reject it, some right? things about. What? But you can also reject it. I do reject it because there is no evidence. But you also don't claim that definitely there's no God Yes, like that. yes. I reject it, but I don't make an alternative claim. Mm. The rejection is sufficient for me. That's what I'm saying. Okay, isn't agnosticism then kind of a polite way to reject God? Actually, I have found the opposite. Agnosticism tends to be an excuse for theists to say, yeah, we can't know, but then there must be something. I found the other thing. I found that agnostic atheism is the most philosophically solid position to stand on. Okay. Yeah, Based maybe. on the fact that we don't know much about the universe and all that. Can you suggest some articles or papers on agnosticism? I need to read or get more examples. I don't know, man. Like, just use Google, I guess. I can recommend some books. There is a page I have on Amazon called amazon.in/shop/Vimoh, and I've listed some books there. Oh, cool. Yeah. I'll take a look. All Cool. right. So Another point. I mean, if you have time, if there's okay. other people. I actually want to go to another caller because I'm already at 1 hour 24 minutes. Is Yeah, that sure. okay? Go ahead, man. Cool. Thank you. Bye bye. Bye bye. That was Shekhar. Shekhar's gone. Let's see if Mohit Rana is back. Hi, Mohit. हेलो Hello. तो मैं कुंडलिनी पे बात कर रहा था कि जैसे बिजली का झटका लगता है हमको, ठीक है? वैसे ही मेरे को एक बिजली का झटका लगा। वो मेरे जो रीढ़ की हड्डी थी वहाँ से लेके सीधे मेरे हेड तक पहुँचा। तो मुझे वहाँ पे पता चल पाया कि वो राइज़ किया है। समझे आप? ओके, ओके। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था और उसके बाद मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ तुमने मैं वो मोहित, मैं तुमको बताता हूँ ना, मैं तुमने जो कहा उससे मैं क्या समझा मैं तुमको बताता हूँ, तो मुझे बताना मैं गलत हूँ या नहीं। हाँ, तुमको अपने बैकबोन के नीचे एक बिजली का झटका जैसा फील हुआ। हाँ। दैट्स ऑल। वहाँ से ऊपर को उठा। मैं ये नहीं क्या कह रहा उठा? कि वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे झटका महसूस हुआ, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ से डायरेक्ट ऊपर को गया। वहाँ से डायरेक्ट ऊपर को गया और वो मेरे सीधे मतलब सर में पहुँचा। वो झटका लगता सीधे हुआ तुमको ऊपर की तरफ गया। सर में वो स्ट्राइक झटका किया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हाँ, बैकबोन के नीचे से वो झटका लगना शुरू हुआ और ऊपर की तरफ गया तुम्हारे सर की तरफ। हाँ, स्ट्राइक किया। ओके, फिर? और फिर उसके बाद जो एक वो होता है ना, एकदम एम्प्टीनेस अंदर से मुझे एक महसूस हो रही थी, जिसमें मैं मतलब अपने ब्रेन को मैं अपने सर को टच कर रहा था, पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि जैसे कुछ अंदर है भी या नहीं। मैं अपने पेट को टच कर रहा था, तब भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं अपने बॉडी इसको के हर एक पार्ट को टच अगर तुमको कभी-कभी लेकिन मतलब मुझे नहीं पता ये वो एक्चुअली एक हाँ, इलेक्ट्रिक मतलब झटका था या नहीं। बहुत ही पर बहुत ही मोहित सुन लो। हाँ, ये झटका जब और बिजली का उस झटका लगता है तो काफ़ी समय तक लोग सुन्न रहते हैं। उनको कुछ फ़ील नहीं हो पाता। इसको कई लोगों की मौत हो जाती है, इतनी ज़ोर का लगता है। तुमको जो लगा वो अगर हाँ, असल में हाँ, बिजली का झटका था तुमको जो लगा हाँ, अगर वो असल में बिजली का झटका था, देन दिस इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। एंड इफ इट वाज़ समथिंग एल्स, इट मे हैव समथिंग टू डू विथ योर नर्वस सिस्टम। सो आई वुड रिकमेंड बिजली गो के टू द झट डॉक्टर एंड चेक इट आउट। बिजली के झटके के लिए कोई सोर्स होना चाहिए, वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं था। मैं हाँ, तो वही मेडिटेशन बोल कर रहा हूँ रहा ना, था। दूसरा तो ये कुछ नर्वस भी हो सकता है, नर्व का कुछ इश्यू हो सकता है। पूरी बात तो सुन लो। वो अच्छा, सुनाओ। और उसके हाँ,
उसके बाद मुझे बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा था, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एम्प्टी है, और ये पूरे रात भर रहा, और उसके बाद फिर चला गया, सुबह के टाइम पे चला गया। लेकिन इससे पहले जब वो लगा झटका, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी डेथ हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर धीरे-धीरे किसी तरीके से मैंने मतलब यूट्यूब में कुछ वीडियो देखी कि क्या करूँ? फिर मैंने पानी वगैरह पिया, उसमें बता रहे थे पानी पीते रहो। मैंने पानी पिया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला काम रहो, गाना सुनो, कुछ ना कुछ सुनो, और फिर धीरे-धीरे मतलब ठीक हो गया। जैसे-जैसे मैं अच्छा फ़ील करने लगा, वैसे-वैसे वो सब कुछ ठीक भी होने लग पड़ा। सो उसके बाद मेरे को एकदम जो मैं बोल रहा था कि एकदम एम्प्टीनेस महसूस हो रही थी, वो महसूस होना स्टार्ट हो गई। ओके। हाँ, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि पर मैंने ऐसा कोई सोच के मेडिटेशन नहीं की थी कि मतलब मुझे कोई कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेना है या ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बस ऐसे मेडिटेशन कर रहा था, हाफ एन आवर के लिए करता हूँ मैं डेली, और मैं इसको कर रहा था। जितना जितना मुझे पता है, मैंने जहाँ पे भी देख रखा है, कम से कम 10 साल तो लगते ही हैं मतलब नॉर्मली ऐसा कुछ होने के लिए। तो मैं बस क्या? फ्रीली मज़े में ऐसा कोई झटका वगैरह लगने के लिए कुंडलिनी वगैरह मोहित, में। मोहित एक बात पूछूँ? तो हाँ, तो मैं आपसे डॉक्टर को पूछ पता रहा है? हूँ कि अगर नहीं मोहित एक बात पूछूँ मैं हाँ, एक चीज़ पूछूँ? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा साइकोलॉजिकल कुछ है ये वो वगैरह, मैं नहीं गया। भैया अगर अगर ऐसा फिर कभी हुआ और तुम उस समय मोटरसाइकिल चला रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो तुम्हारी जान जा सकती है ना? मुझे पता है कि वो किस वजह से हुआ है और किस समय पे तुम्हें होता नहीं है। पता है, मुझे मुझे क्योंकि पता तुम्हें है, सिर्फ़ एक झटका लगा। नहीं पता है, तुम्हें पता होने का कोई तरीका ही मुझे नहीं है। मुझे तुमने पता एक है। चीज़ फ़ील की तुमने एक चीज़ फ़ील की ये और ये तुमने उस चीज़ ये मोहित बात सुन लो यार, ये सेंटेंस खत्म करने देना भाई। मैं पेशेंस से सुना, तूने ये सब कुछ बोला। मैं जो बोल रहा हूँ एक बार सुन लेना, पूरा खत्म करने दे मुझे। हाँ, बोलो, बोलो। You felt something and हुँ, you thought that you understand it. But you हुँ। don't because you can't. There is no way you can know without an analysis of your body. और तुम्हारा वो एनालिसिस सिर्फ़ एक डॉक्टर कर सकता है। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, अगर तुमको ऐसे झटके लग रहे हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एपिलेप्सी में भी लोगों को ऐसा होता है। डॉक्टर के पास जाओ, हो सकता है कोई और कारण हो। डॉक्टर तुमको बता पाएगा। अब अपने आप को अब मेडिटेशन के रूप में डायग्नोज़ मत करो, हो सकता है तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम्स और बढ़ अ, जाएँ। अभी मैं अपनी बात स्टार्ट करता हाँ, हूँ। बोलो। मेडिटेशन के समय पे बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है? और मैं ऐसा नहीं है कि ये अचानक से सीधे हो गया। वो बीच में जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारे मेरे साथ हो रहे थे, ठीक है? जैसे अपने थॉट्स को एकदम ज़ीरो करना, पॉज़िटिविटी फ़ील करना, एक अजीब-सी एक हैप्पीनेस, खुशी होना, ठीक है? वो हुँ। सब सीक्वेंस वाइज़ सीक्वेंस हुआ, और उसके बाद जाके कुंडलिनी का जो भी मैंने आपको बताया, ये 1 साल बाद हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से लंबी जर्नी होती है। लेकिन मैं तब उस चीज़ को एन्जॉय कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये 1 साल में इतनी जल्दी हो जाएगा, पर ये Mohit, हो गया। Mohit, 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 I'm gonna put an end to this ये सब call and I'm gonna put an end to this call अच्छा, and ये I'm सब gonna छोड़ो। recommend मुझे मुझे मेरी इसके बात सुन लो भाई, मुझे इसके मेरी बात सुन इसके लो, मेरी अलावा बात भी सुन लो। हाँ, मोहित, मेरी बात सुन लो। कुछ हाँ, लैग हो रहा है हाँ। शायद इसलिए हमारी बात ओवरलैप हो रही है, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस झटके को डबल चेक कराना चाहिए, क्या हो रहा है। हो सकता है डॉक्टर तुमको कोई एक्सप्लेनेशन दे पाए, क्योंकि तुम घर पे बैठ के इस प्रकार के डेंजरस चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो। अगर तुमको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है बाद में ये तुम्हारे लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो। अच्छा, ठीक है, मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊँ अभी? हाँ, बताओ? है आपका युगास के ऊपर क्या व्यू है? युगा युगास साइकिल्स के के ऊपर ऊपर? हाँ। अ, कौन-सा योग? ये वाला योग, कलयुग जिसको खत्म होने में अभी 14 लाख साल बाकी हैं? नहीं, मतलब जो वो चतुर्युग करके ये पूरी साइकिल है उसके ऊपर। चतुर्युग, अगर अगर मैं चतुर्युग के टाइम स्केल्स को लेने जाऊँ, तो जो लाखों करोड़ों सालों का इतिहास बताया जाता है पृथ्वी पर इंसानों का, वो साइंस से हुँ। मैच नहीं करता। हाँ, वो मुझे भी लगता है कि ये जो है ये साइकिल थोड़ी गलत है। अब हुँ। ये मैं कुछ प्रेज़ेंट कर सकता हूँ क्या? प्रेज़ेंट मतलब स्क्रीन पे? हाँ।
अरे भैया मेरा ही वीडियो नहीं आ रहा, कनेक्शन बहुत दुर्बल है, सिर्फ बात कर सकते हो। चलो ठीक है। या फिर तुम अगले हफ्ते तो आगे बेसिक अगले क्या प्रेजेंट करना है वैसे? मैं एक मतलब एक पीडीएफ फाइल मैंने खुद बनाई है, मैं दिखाने की आपको। किस बारे में है वो? ये युगा साइकिल के ऊपर है, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा मतलब हूँ। ये थियरी युगा साइकिल के बारे में तुम्हारी खुद की थियरी है? ये मतलब जैसे मतलब आपको एक चीज़ तो पता है आपको, जैसे हिस्ट्री में चीज़ों को बार-बार लिखा जाता है, क्योंकि पेपर सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उनको बार-बार लिखा जाता है। तो उस दौरान गलतियाँ होना लाज़मी है और बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? ओके। तो उसमें ये जो युवा साइकिल जो है, इसमें 4.32 मिलियन ईयर्स की साइकिल बन चुकी है। जबकि हमको बहुत अच्छे से पता है कि हिस्ट्री जो है वो कभी भी इतने लंबे टाइम स्केल्स पे नहीं चल पाती है। हमको खुद अच्छे से पता है कि उस टाइम पे कोई भी मोहित इंसान तो मोहित छोड़ो, वहाँ पे मोहित बैकग्राउंड में हाँ, में टीवी चल रहा है शायद। उसको इग्नोर मारो। इग्नोर नहीं कर सकता, बहुत प्रॉब्लम हो रही है समझने में तुमको। एक मिनट टीवी बंद रुको। कर सकते हो या कहीं थोड़ा दूर मूव कर सकते हो? थोड़ी दूर मूव करता हूँ। दूर मूव पिछली बार भी किया था, तुम्हारा कनेक्शन वीक हो रहा है। हेलो मोहित, मोहित नो, मोहित मुझे छोड़ के चला। हाँ मोहित हेलो। वापस आ गया। हाँ क्या चल रहा है बताओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो ये आपकी योगा साइकिल्स है, ये 4.32 मिलियन ईयर्स की बन गई है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे टेक्स्ट जो है पास ऑन हुए तो उसमें गलतियां आ गई। रियलिटी में ये योगा साइकिल जो है 43,200 ईयर्स की है, ठीक है? 43,200 ईयर। इस मुझे एक चीज बताओ, ये हाँ थियरी तुम्हारी है या किसी और की है? हाँ जी, क्या चीज? ये जो थियरी है 43,000 वाली, ये तुम्हारी है या किसी और की है? मेरी खुद की तुम्हारी खुद की है, श्योर? हाइपोथेसिस। हाँ, ओके गो ऑन। क्यों आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये किसी और की? नहीं तुमने पीडीएफ कहा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा होता तो तुम वर्ड में लिखते, पीडीएफ कैसे बनाते? तो मैं उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। अच्छा वो बोल रहे हो। अच्छा मुझे लगा, नहीं पीडीएफ आमतौर पे जब लोग बोलते हैं मुझे लगता है किसी डाउनलोडेड चीज़ की बात कर रहे हैं। नहीं, डाउनलोडेड नहीं है, मैंने खुद बनाई है। अच्छा ठीक है, बताओ फिर। तो बेसिकली हाँ, तो मैं कह रहा था कि बेसिकली 43,200 ईयर्स की साइकिल है, जो आपका इसका बेसिस ये है कि जैसे हमारा योगा है, योगा और मेडिटेशन जो है, इसकी जो एवोल्यूशन है ये हंटर गैदरर टाइमलाइन से मतलब उस टाइम पीरियड तक जाती है, ठीक है? जो हमारा कॉग्निटिव एवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था इंसानों का, बिटवीन 70,000 ईयर्स टू 30,000 ईयर्स के बीच में जो कॉग्निटिव एवोल्यूशन हुआ, उस टाइम पीरियड के बीच में कहीं पे इसका ये स्टार्ट हुआ। और ये जो युगा साइकिल्स है, इसमें 17,280 ईयर्स आपका सतयुग का है, 12,960 ईयर्स त्रेता युग का, और फिर द्वापर युग 8,640 एंड कलयुग जो है 4,320 ईयर्स का है। इसका कोई भी रिलेशन इस चीज से नहीं है कि कोई तबाही होगी या ये होगा, वो सब सूडो साइंस है, ठीक है? इसका रिलेशन इस चीज से है कि कैसे ह्यूमन सोसाइटीज प्रोग्रेस करती है। ये इसलिए कभी नहीं बना था कि मतलब कि यहाँ पे तबाही हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब बाद की एडिशंस हैं, ठीक है? अच्छा रियलिटी तो में मैं एक बार मतलब पूर्व पक्ष कर लेता हूँ। तुम ये कह रहे हो कि हाँ, 43,000 ईयर्स का एक्चुअली हमारा एक्चुअल इतिहास है, और ये जो युगों के बारे में लिखा है ये उसी के अंदर ये हुए हैं सबके इतिहास सब। नहीं, ये इतिहास नहीं है 43,200 ईयर्स का। ये साइकिल तो पता नहीं वैदिक पीरियड में कहीं पे बनी है, ठीक है? लेकिन ये जो साइकिल बनाई है उन्होंने 43,200 ईयर्स की बनाई है। उन्होंने बेसिकली क्योंकि हंटर गैदरर जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे सिर्फ योगा एग्जिस्ट करती थी, पर सिविलाइजेशन नहीं थी। उस टाइम पे सिविलाइजेशन नहीं थी। सिविलाइजेशन हमारी 10,000 तुम ये बीसी किस जब बेसिस पे एग्रीकल्चर तुम ये तुम जब ये एग्री किस जब एग्रीकल्चर तुम ये स्टार्ट तुम ये हाँ किस तुम ये किस बेसिस पे बोल रहे हो? तुम ये स्पेक्युलेट कर रहे हो या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है एंथ्रोपोलॉजिकल वगैरह? देखो एक चीज जो आपका एक ये होता है त्रेता युग से जो रामायण की बात हम करते हैं कि रामायण जो है वो
त्रेता युग के एंड में कहीं पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। रामायण त्रेता युग के अंत में, हाँ, वैसा ही कुछ कहा जाता है। हाँ ऐसा, पर हाँ वो त्रेता युग हिस्टोरिकल के नहीं है, एंड, वो हिस्टोरिकल नहीं है, हाँ वो मिथोलॉजिकल है। वो हिस्टोरिकल नहीं है। उस चीज पे हम नहीं जा सकते हैं कि वो हिस्टोरिकल नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो बात की नहीं, बात है। मैं इसलिए कह वो रहा तो हूँ, लोगों के, मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ वो हिस्टोरिकल नहीं है, क्योंकि उसके हिस्टोरिकल होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। प्लस हाँ उसके हाँ उसका जो लिखित वर्जन है वो काफ़ी रीसेंट है, और दूसरा हाँ उसके हाँ अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं जो कि असंभव है। ये 3 कारण हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ वो इजोटेरिक मीनिंग्स है और मेटाफोरिकल मीनिंग उसमें होते हैं, एग्ज़ैक्टली, उसमें सो कोई इट्स बात नहीं है। बेसिकली अ वर्क ऑफ हाँ पोएट्री दैट मे बी हाँ बेस्ड ऑन हाँ सम रियल इवेंट्स, बट इट्स बेसिकली हाँ लिटरेचर। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वो हुआ हुँ, होगा, कुछ इवेंट्स होंगे, बट रियलिटी में जैसे मान लो रावण की लंका है, अब उसको सोने हुँ। की बताते हैं, लेकिन उस टाइम पे मनी का जो मापदंड था वो सोना नहीं था, बल्कि गाय थी, बल्कि गाय या बकरी या कैटल, आपका जो भी है, ये सब था उस टाइम पे। हुँ। तो कितने साल बेसिकली पहले? ये जो कितने साल ये पहले? ये आपका 10,000 BC, 9,600 BC, इस टाइम पीरियड के आसपास। प्रॉब्लम ये है कि तब गाय नहीं थी। जब एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई उस टाइम, मतलब 9,000 BC से 7,000 BC के बीच में, इस पीरियड में। गाय नहीं थी हमारे पास तब, औरऑक्स थी, और औरऑक्स गाय जैसे नहीं होती, उनको बेचना खतरे से खाली नहीं होती। गायों का एवोल्यूशन औरऑक्स से हुआ है। औरऑक्स उतने साल पहले नहीं थी, वो तब काफ़ी वायलेंट हुआ करती थी, और उनको ह्यूमन देखो ट्राइब्स में लाके काफ़ी साल तक जैसे हमने ह्यूमन ब्रीडिंग की है ना कुत्तों की, हमने वैसे ही की है, और तब जाके हमको वो गाय मिली हैं जो आज हैं। औरऑक्स बहुत ही अग्रेसिव और डेंजरस हुआ करती थी। मैंने कहा 9,000 BC से 7,000 BC के बीच में, कुछ श्योर नहीं है कि कहाँ पे, पर कहीं पे भी हो सकता है ये। हम इस बात को श्योरली जानते हैं कि तब गाय नहीं थी। 9000 7,000 बीसी में। BC, 7,000 BC के आसपास डोमेस्टिकेशन हो गई थी स्टार्ट गायों की। Wait, let me tell you how old aurochs are. Maybe I'm wrong. Hold on. Aurochs is a cattle species that was. अच्छा, तुम भी सर्च कर रहे हो क्या? हाँ मैं बस ये कर रहा हूँ, व्हेन वर काउस डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया। क्या मिला? 9,000 years ago, हाँ, 7,000 10,500 BC। साल, हाँ 10,500 साल 7,000, पहले की बात है। हाँ, रफ क्या, ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ, रफली। हाँ I'll give you that. Okay, cool. Go on. हाँ। तो उस टाइम पीरियड के आसपास ये जो इवेंट्स हैं, अब बेसिकली ये कोई ट्राइबल इवेंट है, जितना जितना मुझे समझ आता है, ये कोई ट्राइबल इवेंट है, ये कोई इतना, क्योंकि उन्होंने तो उस चीज़ को एग्जैजरेट कर रखा है, लेकिन वो बेसिकली ट्राइबल इवेंट है। बट मेन पॉइंट ये है कि त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में कहीं पे रामायण हुई है, ठीक है। और अभी तो मान रहे यंगड़ेस थे कि नाम नहीं, का एक, अभी तो मान रहे थे हाँ कि नहीं हुई है। अभी तो बोल रहे थे कि नहीं हुई है। देखो, जो रामायण है वो कुछ रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, रियल इवेंट्स के ऊपर। उसकी रियल स्टोरी क्या है वो हमें नहीं पता है, देखो मोहित, बस इतना फर्क है। हाँ हाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे लिए रामायण है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि रामायण में वो सब हुआ था जो लिखा हुआ है? मतलब एक किंगडम थी जहाँ पे लोग संस्कृत में बात करते थे, और एक राजा थे और उनके बेटे थे और नहीं राक्षस नहीं थे। नहीं 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 तो नहीं क्या है नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं रामायण? क्योंकि अगर तुम ये 10,000 राक्षस, बीसी की बात कर रहे हो, तो रामायण वैसी नहीं हो हाँ सकती है जैसे हम जानते हैं। तो तुम्हारे लिए रामायण है क्या फिर? हाँ। तो मैं भी, मेरे लिए ये एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, एक एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के साथ, मतलब उनकी ओके। ग्रुप के साथ, बस क्या सिंपल तुमने यही है। क्या तुमने इस थ्योरी को क्या तुमने इस थ्योरी को किसी एक्चुअल हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ कंपेयर किया है? एक आपको एक पता होगा, यंगर ड्रेस करके एक पीरियड है जो हमारा करीबन मोहित, बहुत नाइन, डिस्टर्ब, बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रही है। यंगर ड्रेस करके एक इवेंट है जो हमारा 12,900 ईयर्स से लेके कुछ 11,600 ईयर्स के बीच में हुआ था, हाँ, राइट। और वहाँ पे तुमको ये किसी ट्राइबल वॉर के एविडेंस मिले हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे ट्राइबल वॉर के एविडेंस नहीं मिले हैं। मैं ये बेसिकली बोल रहा हूँ कि जो हमारा युगा साइकिल्स बनी है, ठीक है, हम्म, वो हम्म, उन्होंने, जिन लोगों ने ये युगा साइकिल्स बनाई, उन्होंने बेसिकली ये देखा कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे कर रहा है और कौन से पीरियड के बाद इंसान इवॉल्व किया। जैसे
हंटिंग गैदरिंग जब खत्म हो गई तो उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, राइट? ओके करीबन 10,000 बीसी के मोहित आसपास मोहित करीब। मोहित मोहित हाँ मोहित दिस हाँ इज फैसिनेटिंग बट आई डोंट थिंक वी आर गोइंग इन अ यूजफुल डायरेक्शन विद दिस। तुम अपने पेट्स थ्योरी को बता रहे हो और जब तक हमारे पास इसका कोई मतलब तुम ये कह रहे हो कि हाँ मैंने साइंटिफिक और हिस्टोरिकल दूसरा, कंसेंसस को देखा। सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ तुमने हाँ साइंटिफिक हिस्टोरिकल कंसेंसस को देखा और तुम अपने मर्जी से इवेंट्स को वहां पे फिट कर रहे हो। ये यहाँ पे हुआ होगा, वो वहां पे हुआ होगा। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज एज फार एज स्पेकुलेशन इज कंसर्न्ड, बट हाँ। इसको सीरियसली लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। अगर तुम इसको कहानी के रूप में बता रहे हो देन ग्रेट, वंडरफुल, गो फॉर इट। लिखो, अच्छा खासा नॉवेल लिखो। पर जो मैं उसके आई डोंट बाद नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव विद दिस। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम समझते हैं युगा साइकिल्स, वो उस तरीके से नहीं था। ये एक जैसे जो हमारी वैदिक टाइम पीरियड था, उस पे इन्होंने लोगों ने जिन्होंने भी ये साइकिल बनाई, उन्होंने ये सिर्फ इस चीज को दिखाने के लिए बनाई थी कि सिविलाइजेशन कैसे प्रोग्रेस की है। यानी उनको एक हिस्ट्री का सेंस था अपने से पहले का, ठीक है। और उनको ये पता था कि कुछ योगा योगा करके जो है वो उसके उसके जो सोर्स है, मतलब जो स्टार्ट हुई है वो सतयुग कहीं पे यहीं पे स्टार्ट हुई ये है। तुम्हारा और ये उनके तुम्हारा ये तुम्हारा स्पेकुलेशन है, राइट? हाँ, ये सतयुग वाला स्पेकुलेशन है। और बाकी सब, बाकी जो ये त्रेता युग और ये है, ये बेसिकली उसी से आ जाता है जो रामायण तो रामायण का तुमने वो है तुमने उसमें। तुमने उस पीरियड के हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा। और किस पीरियड की? जिस भी पीरियड की तुम अभी बात कर रहे हो, मतलब तुमने कहा ना सतयुग वाला हाँ स्पेकुलेशन हाँ है, उसके बाद वाला तुमने स्टडी किया होगा थोड़ा हाँ बहुत, हाँ, राइट? थोड़ा बहुत किया, उतना उतना कुछ खास नहीं, बहुत ठीक है। थोड़ा बहुत। तो हाँ आई वुड रेकमेंड दैट यू डू मोर स्टडी एंड रियली फ्लैश इट आउट एंड आस्क समवन टू टेक इट सीरियसली, बिकॉज राइट नाउ मैं बस कहानियां सुन रहा हूँ और मेरे पास उतना टाइम नहीं है बॉस। अभी मुझे दूसरे कॉलर लेने हैं और और लाइव स्ट्रीम खत्म करना है। और एक और चीज है जो एक मोहित, एक आपका मेक दिस योर फोर, लास्ट पॉइंट, मेक दिस योर लास्ट पॉइंट। और एक वो द्वापर युग से कलयुग के बीच में जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन पीरियड, उसमें एक 4.2 किलो ईयर इवेंट करके, आपको पता है इसके बारे में? 4.2 किलो ईयर इवेंट, क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो, बताओ ना। ये एक इवेंट है जहाँ पे मतलब जो हमारा हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गया था। आपको पता होगा वहाँ पे एरिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी, और यस, जो नदी थी वो सरस्वती नदी वो सूख गई थी, राइट? यस, तो हाँ, ऐसा उसको कुछ कहा, उसको कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, वहाँ पे घग्गर हाँ खाकरा नदी थी, वो सूख गई थी। उस नदी को कुछ लोग सरस्वती हाँ। कहते हैं। हाँ, सो बेसिकली कलयुग जो हम बोलते हैं ना, कलयुग 3102 बीसी में स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली वो ओके। ट्रांजिशन की स्टार्टिंग है, वहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ है 3102 बीसी से कैसा लेके ट्रांजिशन? 2000। जैसे युग संधि बोलते हैं, युग संधि बोलते हैं, हर एक युग की उसकी संधि होती है। जैसे ओके। जैसे आपका द्वापर युग है, द्वापर युग की युग संधि जो है उसकी 1/10 पार्ट होता है, 864 ईयर्स। हम्म। हाँ, तो 864 पर ईयर्स तुम की इसको युग ट्रांजिशन संधि, पीरियड था। मोहित, राइट दिस आउट मोर। हाँ, तुम कंप्लीट स्पेकुलेशन कर रहे हो। इट्स एन इंटरेस्टिंग थियरी बट आई थिंक यू शुड राइट इट आउट एंड स्पेकुलेशन कंपेयर इट। स्पेकुलेशन नहीं है। जितना जितना उसमें जितना डिटेल, जितना युगा साइकिल की स्पेकुलेशन इस नॉर्मली बात को बोल डिटेल। रहा हूँ, स्पेकुलेशन इस बात को बोल रहा हूँ कि तुम उस जगह को युग संधि कह रहे हो, जबकि कहीं भी हाँ, ये नहीं लिखा है कि वो युग संधि है। जो लोग युगों को मानते हैं उनके हिसाब से युग युग संधि लाखों के करोड़ों बारे साल के होते हैं। मैं कह रहा युग हूं कि संधि के बारे तुम युगों की थियरी हम्म, को रैशनलाइज करने के लिए हिस्टोरिकल पॉइंट्स में अपनी मर्जी से डेटा पॉइंट्स इंसर्ट कर रहे हो एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई मैंने लाइक इट। पर इसको मैंने युगा सीरियसली साइकिल लेने का कोई कारण नहीं है। मैंने योगा साइकिल के डायनामिक्स देखे, मैंने देखा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें ऐसा दिया हुआ है 40%, 30%, 20%, 10%। और उसमें ये भी हम्म, दिया हुआ है कि उसका 1/10 पार्ट जो है वो बेसिकली आपका ये होता है, ये आपका युग संधि होता है, राइट? हम्म। तो जो जो आई फोर गेट इट, पॉइंट आई गेट तो इट। मैं मोदी, हाँ सॉरी, हाँ Mohit, this is okay. हाँ Continue doing it, but there is no reason for me to take it seriously because this show is not about that. If you want to write fiction about it, if you want to write a theory about it, feel free to go ahead. पर तो तुम अपनी बेसिकली मर्जी से डेटा पॉइंट्स इंसर्ट कर रहे हो। तुमको थ्री तुमको थाउजेंड ऐसा कोई हिस्टोरियन तुमको ऐसा कोई हिस्टोरियन नहीं मिलेगा जो कहेगा कि ये डेट, मतलब ये वाला हड़प्पा वाला पॉइंट यहाँ पे युग संधि थी। ये तुम अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हो ना। तुम दो चीजों को लेकर एक दूसरे के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हो एंड दैट्स ओके, फील फ्री टू डू इट, बट व्हेन ये यू हैव, आई थिंक यू शुड फिट पुट सम। करना नहीं है।
देखो वही बात है ना, जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक कुछ कंक्लूसिव आएगा नहीं, राइट? अभी तक इसके ऊपर कोई रिसर्च हुई नहीं है, क्योंकि पुराणों को हाँ, तो करो ना, ऐसे ही तो करना। उसको शुरू अब से। मैं लेट मी तो कोट द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। मैं मैं तो दिल्ली कर का रहा दिल्ली चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, तो कर ना, परेशान हो गए हम लोग। हूँ, तो करो, मैं तो रिसर्च कर रहा करो। हूँ, हाँ, तो मैं करो तो कर और अच्छे से करो, अच्छे से करो। आई थिंक इट्स अ गुड लाइन ऑफ थिंकिंग, बट इफ यू फाइंड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग इट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। सो अभी मैं तुमको हटा रहा हूँ, किसी और पे जा रहा हूँ, ताकि लाइव थैंक यू, स्ट्रीम करते करते मेरा स्वर्गवास ना हो जाए, ठीक है? चलो, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। सो दैट वाज मोहित एंड ही इज गॉन। वेट, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? I'll take one last caller and then I'll end today's live stream. 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट होने वाला है। लेट्स सी कौन-कौन है यहाँ पे? ब्लेसॉन, तूने चैट को स्पैम कर दिया। आई एम गोना बैन यू फ्रॉम चैट। जस्ट डोंट कीप स्पैमिंग। आई हैव टू रीड अदर पीपल्स मैसेजेस आल्सो। I want to talk to you about books. Won't take much of your time. Only 2 minutes. Okay. SJ. SJ, you're online. Hello, can you hear me? Hello. Yes. First of all, happy birthday, belated, but Thank you. happy Thank you. birthday. Appreciate And it. and I actually, you know what's the funny thing? I actually saw the stream with Meghnad that you were doing on your birthday Okay. of last year. So that's why I Oh, remember that okay. your I birthday was don't on even your remember I birthday. did a live stream on my birthday last year. What was it again? You did. Yeah, you. The title was that Meghnad came to my birthday party. Something like that was the Oh, okay. title. Ha. I think I remember Yeah. this. I don't have a clear recollection though. Ha. Go on. What did you want to Yeah. talk about? Yeah, I just wanted to ask you that you read a lot of books, right? What are your favorite books? Oh, there are. This is a problem because when people have a favorite book, it's usually because they have read 10 books. My Yeah. bookshelf is too big for me to be able to tell you one book that is my favorite. Okay, Some of the books I'll. that are my favorite, I have a web page at amazon.in/shop Okay. slash Vimoh. If you go there, I've listed out some of my dear books. There is no one Okay. favorite. Okay. And second question of mine was, you read comics, right? Yes. So I want to start reading comics. What is the starting Mhm. point? Because there are many issues and many things. Indian comics. Yeah. Okay, go to any Raj Comics, any place where you can get Raj Comics, and buy Pratishodh Ki Jwala, which is the first issue of Super Commando Dhruv. And then Okay. read more Dhruv comics. Read the old ones, not the new ones. Old ones. You Okay. you you'll eventually get to the new ones in due course of time. But the old Nagraj and Dhruv comics, those are the best. Pratishodh Ki Jwala, Behri Maut, Barf Ki Chita, Wow. Grandmaster Robo, all that. Okay. Yeah, Okay. काफ़ी And what फ़िल्मी नाम about? है। बहुत ज्यादा फिल्मी नाम है। It's like वो एक और नाम भी था, but okay. Anyways, moving on to the second point is that आपने DC और Marvel की अगर comics पढ़ी हो तो वो कहाँ से start कर सकते हैं? Like picking up a मैं character? एक्चुअली मैं एक्चुअली इतना डीसी मार्वल के बारे में बता नहीं पाऊँगा, Okay. उसके लिए दूसरे लोग हैं। मे बी वन ऑफ दीज़ डेज़ आई विल गेट अश्विन ऑन दिस लाइव स्ट्रीम एंड ही कैन टॉक अबाउट दैट मोर। मैं अमेरिकन कॉमिक्स की मोस्टली टीवी शोज़ और फ़िल्म ही देखी है। कॉमिक्स एक्चुअली पढ़ना मेरा इंडियन ही है, मैं हिंदी कॉमिक्स पढ़ता हूँ। Okay. Done. Thank you. कूल, That was all. थैंक यू, Yeah. बाय-बाय। That was SJ. Since SJ's call was so short, we can take someone else, and it's probably not going to be Blesson because he's a spammer. Blesson, मैं बोला don't spam. Manoj wants to talk about God and godliness. Let's take Manoj. Hi, Manoj Kesharwani. Hello, hello, Hello. hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Go on. Yes, yes. Do you know about Osho Rajneesh? Osho Rajneesh. हाँ, I've heard of him. He says he talked about he doesn't believe God or creator, but Hmm. he talk about godliness. Okay. Okay, so because he meditates and he experienced that there is no creator or God who created this world, but there is something like godliness which is everything, everywhere, everything, everywhere in the world.
Hmm. So what is your point? I don't even know what godliness means. What do you mean by Holiness it? means it's like bliss. What? Just happiness? Just happiness. Yes. So No, मतलब not मैगी just like खाने के बाद happiness. Just like now normal happiness. It's like just orgasm. orgasm. So godliness means Yes. orgasm. Not orgasm. I'm not talking about just like orgasm, but it's like orgasm. It's like an orgasm. So Yes. basically, you're not having an orgasm, but No. you feel like you're having I'm an orgasm. no. It's I no one can explain it. It Then is what are you doing? no. I just want to take your points on Oso Rajनीश. I have read a few books by him. I think he's a problematic character in that he's a Baba. There's a documentary about him which is problematic. And as far as God and godliness is concerned, you're going to have to give me a clear definition of God and godliness No, before I can tell you. he never believed in God or the creator who created this world. He believes But he that did talk about godliness, right? yes. Godliness means something like which is forever and which will be forever in whole universe, Again, whole the universe. so like the universe itself is godliness. Yes, yes, you can say yes, godliness. Then why not use the word universe? Are you saying the universe is godliness? Are you saying like But literally because the when we look through a but my point telescope, are we my looking at but my point is he's matlab, no one everyone not experience that. Some who meditates and reach the point that feel that that this godliness is everywhere, and he also feels this felt that. I still don't know what you mean by godliness. Are you talking like if you're saying the universe is godliness, then we all experience the universe, right? Are we all experiencing godliness? No. Just this is not the word. Then what are you saying? Nothing else. You can carry. Okay. Okay, Thank bye. you. I'm sorry I could not help. Good night. That was K. Sharwani. Okay. I guess. Okay. Blesson says, I did not spam after you told me. Blesson, it's 9:51 right now. Your last spam message came at 9:47. The one before that came on 9:56. And then 9:56 में 3 और थे, 4 और थे. उसके पहले था 9:44. You have been spamming non-stop. Don't lie. Let me take Blesson. Blesson, what's up? Hello. Hello. Can you turn off the webcam? The connection is very weak. Okay. Yeah, go on. Okay. I wanted this session because you, in by mistake, you accepted that it is reasonable to believe that someone made this, and I liked it. No, I did not. When did I do this? Oh, When did I do you this? cannot lie. Huh? When did I do this? I did not take the time before half an hour. That is approximate time. No, that was in a conversation with someone else, right? That is what I am telling. Yeah. No, that is not how this works. You talk to me, present your arguments, we will discuss. I may have said something to someone. No. So I am meant it agreeing in a to your different that way. point. What Yeah. point? So since What was the point? Hold on. The point was hold the duck on. What point are you agreeing to? I am agreeing to the point that you told that it is reasonable to believe that somebody made it, or I do not think I said this. I don't think I said this. No, one creator who is beyond the universe, who is intelligent, who created, made it, something like this. I have not said this at any point of time in today's live stream. Okay. I don't agree on that. You will not agree. I know. Okay. Listen, if you want to make an argument, make it. Otherwise, I'll just end it. Go on, make your argument. So, my point today is atheists cannot justify objective morality, morality in their worldview, because in this session itself, you told me not to spam, and that is just an opinion of yours. How can you make it a universal morality or law that I should follow it? Because it is everything about
subjective opinions. You said this, so in respect to The others' point of view, yeah. the reason I asked you not to spam is not because I think it is immoral. It's because it's fucking annoying. Okay, but there is no objective morality for me to obey it, right? There is, again, this was not even done for a moral reason. So that argument falls flat before it has even started. I didn't say don't spam because it is immoral. I said don't spam because it's annoying. That is purely subjective. Someone else in my place might not have found that annoying. Okay, so how do you cannot justify objective morality? That's just my point in an Yes, atheistical I can. worldview. I can. How? I made a video about this yesterday. Let me just share it with people. Maybe you can watch it and No, then we no, can talk about it. I Hold watched on. it. Let me That's why share it. it. Let me share it. Let me other people also watch it. This conversation is not a private call. It's a public live stream. So let me just Okay. share that with people. People can watch it and then we can continue talking. Cool. Here. Is here today, ladies and gentlemen, to give me a neurobiological, a logical, a mathematical, any model to allow us to arrive at objective morality. यहाँ चैलेंज ये है कि एथियस्ट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तक नहीं पहुंच सकते और इम्प्लीकेशन ये है कि सिर्फ रिलीजन या गॉड ही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को जस्टिफाई कर सकता है। आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन पर। ऑब्जेक्टिव मतलब वो जो हर किसी को अप्लाई होता है और सब्जेक्टिव मतलब वो जो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। पहला इश्यू ये है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब हमेशा यूनिवर्सल नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये भी हो सकता है कि गिवन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करती है, कोई वैल्यू अप्लाई करती है। मैट डिलहंटी चेस गेम का एग्ज़ाम्पल देते हैं। अगर 2 लोग चेस खेल रहे हैं, उन दोनों को चेस के नियमों को फ़ॉलो करना होगा, नहीं तो वो गेम खेला नहीं जा सकता। एक व्यक्ति अपने रूल्स और दूसरे व्यक्ति अपने रूल्स फ़ॉलो नहीं कर सकता। अगर करेगा, तो वो गेम काम नहीं करेगा। चेस के रूल्स ह्यूमन इमेजिनेशन से आए हैं, मतलब हमारी सब्जेक्टिविटी ने उन्हें बनाया है। पर चेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो ऑब्जेक्टिवली काम करते हैं। इसी प्रकार मोरालिटी भी ह्यूमन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्टिवली काम करती है। अगर ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करेंगे, तो ह्यूमन सोसाइटी भी उसी प्रकार बेकार हो जाएगी जैसे एक चेस का गेम जिसके प्लेयर्स अलग-अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। गॉट इट? यस, तो यही तो पॉइंट है। जस्टिफाई कैसे करोगे आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को? Justify kiya. I just explained the entire thing in the video. Did you not understand it? No, that is not justification. You said since everybody obeys, the meaning of it was since everybody is following a rule, we should also obey a rule. Obey a rule. I said if we do not follow it, human society will collapse. That is justification. Okay. Now let me come to the point that you told that we are just animals. Like last. When did I say that? Time, when did I say that? Last time do you when not we want to talk? Jacob, do you not want to talk about do you not want to talk about morality? No, I want to talk moralities. That's why I'm bringing up at this point. Okay, go on. The point is, you agree that we are just animals, just like other animals. No, I mean not like other animals, but we are animals. Like a parrot and a lizard are not the same animal, right? Like we are a species of animals, Homo sapiens. Yes. That's what I'm saying. Yes. So there is no objective morality in other, like no specific rules in other animals which they should follow in order to make this their society not to collapse. We can survive without that also. That I am saying. But you say that it collapses. Human society is based on tribal behavior. That is why moral rules keep it together. Lions live in groups of 3, and they also have rules between them that keeps them together. If lions started eating each other, those groups of 3 might not work. Wolf packs have rules. A certain wolf will lead them, and a certain other wolf will do something else. Honeybees, ants, everyone has rules in their society. Can you explain some of the rules which rules? They follow, lions or bees? If a lion and if there are 2 lions or 3 lions who live together and they share the food that they eat,
and they, instead of sharing the food, they stopped sharing the food, then will they remain Hmm. together? Yes, they can. No, they can't, because they will die. Why can't? They No, will they will fucking not die die. because it is about, because evolution is about survivability, not about compassion, morality, or Listen, you. no. However, Listen. if yeah. Jacob, how much do you know about chimpanzee behavior or animal behavior? Have you studied these things? I know about that. They have feelings. They do share some their food. They show love. But I am saying Are you it is aware? not necessary. Are Yeah. you aware that? Are you aware that there was an experiment done on monkeys some time ago, which was very unethical, but it showed that if there was a monkey in one cage and there was a monkey in another cage, and you offered this monkey a banana, and you also communicated very clearly that no, you did not communicate. It became apparent to the monkey that if he picks up a banana, the other monkey will receive an electric shock. So the monkeys at first picked up the bananas because they did not like it, because they did not know about this. And eventually they figured out that their picking up the banana is going to hurt the other monkey. So they stopped eating the bananas. They chose to starve instead of hurting another monkey. This has actually been documented. And what went on? Did both of them die? No, but the experiment proves that the monkeys did care about other people, which may be So described yeah, as but moral behavior. but that is subjective, right? There is no What is necessary subjective? that all monkeys should follow this. No, this was done on many monkeys. It is an observed pattern in nature that monkeys care about each other. Same like us. They have also grown to be tribal animals. We have also grown to be tribal animals. There's nothing subjective about it. You can look at society and see for yourself. So you say that whatever all the people are doing, we also will copy, and that becomes our morality. No, that's not what In I'm a, saying. If you could please stop putting words in my mouth and just understand what I'm saying. I am saying that there are certain things that will destroy tribal unity, including murder and damage and sexual violence and stuff. And our moral codes are based on those. If we engage in certain actions, our social unity will get affected. If our social unity gets affected, the safety that we get as a result of that social unity, that goes away. Do you yes, understand? and that's what and that's what I am saying. Today, everything is about subjectivity. Somebody is wearing half-naked dresses, so others are the community. Others belong to majority of the community say that this is There is wrong. But nothing. There is nothing immoral about half-naked dresses. Nobody gets hurt by them. I'm talking about murder. but in You're no no talking in about but in half-naked a dresses. no, I am saying in a majority of people where they accepts that we should be worn decent dresses. When somebody this comes out like What this, is? they will be Can you describe what a decent dress means? decent dress means what they are wearing in their usual community, like what they That's used to wear usually. okay. So how is that Huh. not subjective? You are here trying to make a case about objective morality. If you are going to say that morality hinges on people's clothes, and then you say that decent means whatever a community accepts as decent, then you are saying that Huh. morality is subjective. No, morality is subjective for that naked lady. क्या बोल रहा है बे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. What are you saying? How is it subjective Means for that naked lady? there is an objective morality, but nowadays everything has become subjectivity because of our freedom. Somebody is roaming half naked, somebody is beating their parents because they don't care what is right. First of all, this has nothing to do with what we talked about tribal unity and human values and moral codes emerging from them. But if you think that, let me ask you something. Do you think half naked dresses are immoral? According to my worldview, it should be decent as my society. So I feel it is bad, not immoral. I will not say because okay. So listen. You are saying that morality cannot be subjective; it must be objective. No, I am saying there are objective morality, but atheists can never justify their worldview. I'm asking that a different conversation, boss. Different conversation. I'm saying if your point is that half-naked dresses are immoral,
and you also believe that morality cannot be subjective, then you cannot say that half-naked dresses are immoral only according to you. You have to say that they are universally immoral, right? No, no. Yes, and that's what I am saying. There is Okay, some listen then. laws. Then listen. If half-naked dresses are immoral according to you, then are jeans immoral? Tight jeans, like No, really tight jeans. They're not, but there no. are other people who think that they're immoral. Okay, Do you so think what do you that think do you think showing a woman's face is moral or immoral? it's moral. It's moral, but there are people who think that Huh? it is immoral. They force women to Okay, remain covered completely. no, no, let me ask you a question. Do you think seeing people naked is moral or immoral? It is amoral. It has nothing to do with morality. How will you justify it? I will justify it by saying that it does not hurt anyone. So My then basis, how is it? my Then how it is definition of immoral? morality, it is not immoral. It is not immoral. I said it is So amoral. that's what that A, no, no, it is. I that is said what you are saying. You are listen. yeah. Shut up. Listen. I said it is amoral. AMORAL, meaning it has nothing to do with morality. It's just a thing. Not everything needs to be measured with a scale of moral and immoral, right? So, what I'm saying is if a behavior does not hurt anyone, it is not on the scale of moral versus immoral. Murder is immoral because it hurts people. Sexual violence is immoral because it hurts people. Robbery is Okay. immoral because it hurts people. Nakedness Okay. doesn't hurt anyone. Okay. So roaming naked in public places is not immoral according to you because it is not hurting someone. Yeah. Or masturbating in public places is not immoral because it is not hurting someone. It is hurting someone. Whom it is hurting? If masturbating in public places causes people discomfort and causes people to move away from that place, and if everyone goes around masturbating in public places, then it will affect social cohesion and there are No, how are they physically hurting someone? You told that it should hurt someone. No, I They are did not say physically. I did not say physically hurt. I said that anything that affects the social cohesion of a society is defined as immoral. In societies where nakedness is considered a detriment to social unity, it is considered immoral. But there are nudist colonies. You know that, right? There are people who don't wear clothes, and their society Yeah. doesn't get hurt by it. So in those societies, it is not immoral. Even if you might think that it is objectively immoral. Like, okay, so according to you, is only hurting someone is immoral. So if I steal someone's something and that person does not know, it is not immoral. What did you steal that they did not know about it? Anything which they were not aware of, like if Like a what? maid comes to Give me an your example. if Give me an example of something that you can yeah, steal. I Give me am an doing example of something that you can steal from someone that they don't know yeah, about it. I'm doing that. Okay. For example, in my home, a maid used to come. She used to come every day. There was a unused phone for many times, and she noticed this, and she stole it from there. Now, is it this immoral or moral? But you know about it, right? Later, after some time. But currently, but at the point, I did not know. But you did find out about it, right? But at that point, it is not immoral, right? No. At that point, from the maid's point of view, it is not wrong, right? According to you. No. She is just taking things because she wanted. You did find out. She took something that belonged to you, and you did find out about it. How is this an example of something that you steal from someone and they don't know about it? Because I did not know it for some time of period. When I needed it, then only Beside I knew. the point. So, I'm saying, how is this an example of something that someone steals and you don't know about it? You did find out, so it's clearly not an example of that. After the point I'm finding out, I knew about it. Before before noticing that mobile, because it was unused for a long time, I never knew it. So that lady taking out that phone does not matter until I did know about it. That is what you are saying.
No, I'm not saying that. I'm saying you did find out that she took it and therefore you got hurt, right? And that's where you are telling it's wrong. When I got to know it, when she took the phone, it was not wrong. That is what. If you had never found out about it, would it hurt you? No. Why not? Because it was a phone in your house. I'm assuming there was a SIM card in it. I am assuming people would call it and you would never receive that call. You would never find out about those calls because they came on a phone that you did not even know existed. Would that hurt you? No. No, of course it will hurt you. Somebody was offering you a job over phone and they called on that phone. That job never came to you. You're hurt. You lost an opportunity. If I come to know only, then it will be wrong. No. Even if you didn't come to know about it, it will be wrong because it hurt you. How it did hurt me when I didn't even know about it? Because you didn't get the fucking job. But I was not aware that I will be getting the job. No. But if you had gotten that job, you would be better off, right? And you're not better off because you didn't get it. So you were hurt. How I am hurt? I was not expecting that job. Listen, on Monday, the phone gets stolen. On Tuesday, the job offer comes. On Wednesday, they were expecting you to join and get 10 million rupees in a salary. On Thursday, you still don't know that the phone is gone, but you are missing $10,000. Get it? Yeah. Okay. So is that not you getting hurt? By money did not come to you, but some damage was done to you. No. When I am expecting a job, I would also try to call them back, right? Even if my phone gets, I will try to make that phone number and get back to that office. However, though my phone, it is a reality that my phone got stolen. You don't know their number. You don't know their number. They just called you. They saw your profile picture. You are also now making speculations. They saw your LinkedIn. How you are making assumptions? I'm responding to a speculation with a speculation. If you don't want me to speculate, don't give me speculation. You gave me a hypothetical example. I'm giving hypothetical examples in return. If you don't want that, I am not giving a hypothetical. My main point was you can never justify objective morality in atheistical worldview. You still have to demonstrate that. You haven't done so. I told you to tell me what you mean by immoral. You told me naked, half naked people are immoral. And then you said that according to you, half naked people are immoral. And then we are like, if according to you, half naked people are immoral, but in a nudist colony, fully naked people are not immoral, then how is your morality not subjective? Okay. Let's take out that example. It's going a little weird. So I bring next example, which might be some respectful. Is beating your parents immoral? Yes. Why? Because it hurts them. But according to you, you are doing right. That's what your opinion says. Doesn't matter. It still hurts them. Look, if you are in a society where most of the doesn't matter. It still hurts them. It still hurts them. Doesn't matter what I think. No. But how will you justify it? You are living in a society where most of the people beat their parents, so it is okay for you also to beat. That society will not last long because people doesn't matter. People beating your. Abbe, baat sun le bhai. If you are beating your parents, then your parents are getting hurt. The people who watch you hitting your parents, they get hurt because they're emotionally hurt. See, no, there are no emotions in that society. Oh, so we are talking about Mars or what? You just said you won't give hypothetical examples, and then you're talking about a society where emotions don't exist. So the whole hypothesis was this society, everybody is beating their parents, and it is normal to beat parents. And I'm telling you why that society will break apart. Can I finish? Yeah. You beat your parents are hurt. That's number one. Number two, people who see your parents getting hurt, they get hurt. Number two. That was number two. Number three, people who see you beating your parents trust you less. So they move away from you. Whatever cooperation that might happen between them and you does not happen. That hurts you, that hurts them. If you beat your parents so much that even you don't like it, then you're emotionally hurt and that causes you emotional trauma also. If you have children and a wife, then they also get hurt because you're doing such a thing. Throughout society, this thing will have repercussions. If everyone in their homes is doing it,
then it will have repercussions, and that society will not exist for a long time. But okay, so though okay, tomorrow you do okay. This might be a personal question, but don't take it so much. Do you have children or kids at your home? Your own? That's a personal question. That's it's like it's. I'm taking as an hypothesis for that. Okay, let me consider Yeah. I am an atheist and I have Mhm. children at my home. Okay. Mm. Mm. Tomorrow, if my children says, I tell to my children that you should obey me, and they tell me, but why, Papa? You are also a animal just as I am. What is my justification for this? That he should obey me? Nothing. I am just an animal as he is, and he has now grown up. And if he wants to beat I me, have he can listen, be. listen, Yeah. listen, listen. I have absolutely no idea what you're saying. Can you please explain again? Like that's why I was taking your example. Can I do that? It's a hypothetical example, so don't take it personal. I get it, but I still don't know what the fuck you're talking about. The top problem is there are objective moralities like you cannot kill other people's. That your opinion is not what matters. There are some objective rules to which atheist can And, never. Yeah. and I told you where those rules come from. They come from our need to keep our society together. Why is the so why does that is what my problem is. Then why does this laws where other like other animals also do exist without having somewhere written about this? You are saying that it is written on a moral code. Not every we are the kind of animal that has social cohesion as a defense mechanism. Not every animal does, but some animals do. I gave you the example of chimpanzees. They do have social cohesion as an important factor behind their survival, and they do display behaviors that may be described as moral behavior. But it is not written somewhere like ours. We have but if we do so, we will go to jail. They don't have such things. If you So yeah. they have evolved to be social animals just as we have, and evolution has caused certain impulses to be programmed into them, and those impulses cause them to behave nicely, or at least in a civilized manner, with other members of their society or tribe. So we wrote them down, and they did not write it down. That's all. That's the only difference. No, but why are they following such? It is not necessary, right? That's what I'm saying. It is. If a monkey does not care about its fellow monkey, then when that monkey dies and this monkey does not do anything, other monkeys will stop trusting this monkey. And then that monkey will get thrown out of the tribe. And alone out in the forest, it cannot survive for long. That is the reason. It is evolutionary. It has to do with survival. No. Yeah. So your definition of morality is that anything which makes you survive better, it can be moral or something like that. It's not. No, it's not. I just clarified what I meant by it, and you again misrepresented. And that's why I said that morality is a defense mechanism against society breaking down. We have developed it as a tribal animal. If we did not if we did not behave in moral ways with each other, then our society will not survive, and that has a direct relationship with how we survive, or whether we survive or not. Okay, so let me bring another example that if in peer pressure, listen. Yeah. Next week. Oh, okay. Okay. No. I will be not coming next week. Let me finish this. Then come let's come the week after that. It's okay. It's 2 hours 21 minutes. I don't have energy left. I need. No, I don't want to come back again. That's why. So that's okay. Don't come back. But I'm done. Okay. Bye. Give me 10 minutes, please. No. I don't have time. Bye. Okay, 5 minutes. 5 minutes. Bye. And Blesson is gone. So let's see if my connection will allow my camera to work. Okay, yeah, the camera is working. Haddi pasli ek ho gayi. Not because his arguments were great, but because it's so frustrating to hit your wall
hit your head on the hit your wall on the head, hit your head on the wall. So guys, I'm done done with calls today. 2 hours 22 minutes are over. Anyone who wants to talk can either come back next Saturday or become a member and come on Wednesday. Sanjay Shah, हेलो सर. हेलो. हेलो, क्या चल रहा है? फाइन. आप कैसे हैं? अच्छा हूँ. बताइए, जल्दी से बताइए, क्या बात करनी थी? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वाई दिस ये नास्तिक सोसाइटी बनाने की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है सर? आप अगले हफ्ते आएंगे, बात करेंगे अच्छे से. आज का सेशन पूरा करना है. आज का सेशन पूरा करना है. बहुत 2 घंटा 20 मिनट हो गया, थक गया हूँ, खाना खाना है. ओके, अगले हफ्ते आई आइए, विल अगले हफ्ते आइए, डेफिनेटली बात करते हैं. बात करेंगे और मैं आपको हर साइंटिफिकल आंसर दूंगा. जी सर, आई विल बी पक्का. देयर. थैंक यू. यस, थैंक यू. बाय बाय, गुड नाइट. बाय. ओके, कूल. सो आज का लाइव स्ट्रीम यहाँ पे एंड करते हैं. प्लीज रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रीम गाइस, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा. गुड पॉइंट्स, गुड कॉन्वर्सेशंस, एंड आई एम सैड दैट आई कुड नॉट शो माय फेस फॉर मोस्ट ऑफ इट. अभी भी नहीं, कनेक्शन मर रहा है. रुको, फिर से ऑफ करता हूँ. स्टॉप कैप. आई विल सी यू गाइज ऑन वेडनेसडे इफ यू बिकम अ मेंबर. दिस चैनल को सपोर्ट करने के कुछ तरीके हैं. एक है patreon.com/vimo, एक है मेंबर बनना, यहाँ जो ज्वाइन बटन मार के. एक है UPI, vimoh@UPI, vimoh@UPI. And if you become a member, you can get access to the Wednesday live stream, which is members only. वहाँ पे मैं चैट पढ़ता हूँ और कुछ कॉल्स लेता हूँ, पर ज़्यादातर चैट पढ़ता हूँ. And it's a much more chilled out space. There are fewer people there. So if you want to join on the Wednesday live stream, please become a member. Until Wednesday, if you become a member, I'll see you on Wednesday. Sorry. If you become a member, I'll see you on Wednesday. If you don't become a member, then I'll see you on next Saturday. अगर इस बीच में मुझसे बात करनी है तो हम लोग इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं. मेरा हैंडल है instagram.com/vimoh, VIMOH. And I'll see you then. Until then, please take care of yourselves and yeah, be good to each other. आज बहुत थक गया मैं, पता नहीं क्यों. I think I know क्यों, but I'll see you next time. Bye bye.